Count of 3, 2, 1. We are live, sir. Good evening. Welcome you all to the second day of the National Conference for New Opportunities of Chartered Accountants. I, CA Mohit Jain, Chairman of Kishangarh branch of ICAI, welcomes you all with all my hosting branches, the Alwar, Bikaner, Chittorgarh, and Shri Ganganagar. We all are very delighted to find you all here. Avsar is the new opportunity for chartered accountants. The national conference, which is organized under the aegis of Professional Development Committee, and we are very grateful to find you all of you here. This national conference is really a dream come to all the management committee members. Yesterday also we were having a joined us with Pan India basis. Today, the sessions are very, very important, which are based upon the company's law and also GST. And we all having the eminent speaker. Basically, the schedule of the conference has been reshuffled, interchanged in between the speakers due to their traveling aspects. But we all having all of you, and we are grateful to because of you all to join all the session. Without taking much of your time, I just want to initiate the proceedings and to take you all to the Saraswati Vandana and enlightenment of the lamps. Please, I request you all to join us through the link of different link on my name. Over to you. Thank you all of you. I request you all to please join for the motto song. Tag team, please start. Yaesha supteshu jagrati Yaesha supteshu jagrati Kamam 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 Purusho nirmimanaha Tadeva shukram Tada Brahma Tadeva amritamucchate Tasmin lokaha shataha Sarve tadunatyati kaschan So, thank you everyone for the inaugural ceremony. And now I would like to hand over the session to our first moderator, CA Rajesh Kumar from sir. Thank you, Mohitji. Am I audible? Yes, sir. Perfectly all right. Welcome to all of you, sir. Welcome to all dignitaries of today's National Conference seminar.
as you all know that today is the first session of the second day of the national conference. जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारे यहाँ लर्नेड स्पीकर श्री देवेश गोयल जी का इस फर्स्ट सेशन में, जो कि सेकेंड डे ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें वो कंप्लायंस फॉर प्राइवेट लिमिटेड एंड चेंजेस इन शेड्यूल 3 के बारे में हमें बताएंगे। सर्वप्रथम मैं सीए मोहित जैन जी, किशनगढ़ ब्रांच, जो कि मेन होस्ट हैं और उन्होंने इतनी अच्छा बढ़िया कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरी किशनगढ़ ब्रांच को, मोहित जी को, कि उन्होंने इतनी शानदार कॉन्फ्रेंस का, जो कि वर्चुअल है, और उसका एक आयोजन किया। और कल रिकॉर्ड, मैं सबको बताना चाहूंगा कि कल रिकॉर्ड मोर देन 2500 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इस सेमिनार को ज्वाइन किया। एम आई राइट मोहित जी? Exactly, sir. Sir, some people are joining through ICAI TV, and some people are joining through this Zoom link. Therefore, the counter is around 2,800, and today also the are similar with that. Okay. अच्छा, इसका वर्चुअल जो कॉन्फ्रेंस है, ये वी ऑल नो दैट इससे कोविड की देन है। ये कोविड की देन, ड्यूरिंग द कोविड टाइम लोगों ने इसको बहुत इसका एक फायदा उठाया था, और किशनगढ़ ब्रांच ने हमें जो है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस देकर, एक लर्नेड स्पीकर्स सबके जो है उसमें देकर, और सब प्रोफेशनल सीए ब्रदर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान की है। इसके मैं दो फायदे मानता हूं। एक तो इतने लर्नेड स्पीकर्स को अपन घर बैठे बैठे बिना कहीं जाए, खास तौर से जो छोटे सिटीज हैं उनके लिए तो एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज है उनके सीए प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि वो इतने लर्नेड स्पीकर्स को सुनने के लिए उनको कहीं जाना पड़ता है। बट आज हमें ये घर बैठे ये सुविधा उपलब्ध हो रही है। और जो दूसरा फायदा मैं मानता हूं कि इतने सीपी आवर्स दिए जा रहे हैं और वो भी फ्री में, तो ये सबके लिए जो है मैं होस्ट जो किशनगढ़ ब्रांच है मोहित जैन जी का को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ में इसके जो को होस्ट हैं, जो हमारी अमित अग्रवाल जी, अलवर सीए ब्रांच के चेयरमैन, साथ में श्री इसमें जो है बीकानेर ब्रांच, चित्तौड़गढ़ ब्रांच और श्री गंगानगर ब्रांच, ये भी हमारी को-होस्ट हैं। इन सबके चेयरमैन को, ब्रांचेस को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने शानदार कॉन्फ्रेंस का ये आयोजन कर रहे हैं। और टुडे इज द सेकंड डे। कल बहुत शानदार रहा, आज बहुत शानदार रहेगा, और कल आने वाला बहुत शानदार रहेगा। So मैं first of all I invite Chairman Bikaner Branch, Shri Ankush Chopra ji, to deliver his please welcome speech. Thank you very much. Am I audible, sir? Yes. Sir, thank you very much, Rajesh Kumar ji, for giving this opportunity to Bikaner Branch. Respected our Vice Chairman of CIRC, Kishore ji Baradia, sir. Our Treasurer, Shri Rajiv ji Gupta, sir. Our Vice Chairman of Professional Development Committee, Shri Prasanna Kumar, sir. Our Moderator, Shri Rajesh ji. Chairman of Kishangarh Branch, Shri Mohit ji. Chairman of Shri Ganganagar Branch, Dheeraj Lila ji. Chairman of Alwar Branch, Amit ji. Chairman of Chittodgarh Branch, Yogesh ji, and all the dignitary and all the members who have joined this webinar through this Zoom platform. A very, very good evening to all of you. It is my privilege and pleasure to welcome each one of you who have joined this webinar, particularly on the topic compliances for the private limited and changes in the schedule 3. काफी कुछ चीजें जो अभी चेंजेस हो रही है उस पे हमें वेबिनार के थ्रू जानकारी प्राप्त हो रही है। मैं आभारी हूं पूरी बीकानेर ब्रांच की ओर से मोहित जी का, जिन्होंने आज ये 3 दिन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आज सेकंड डे है। होप सो, मैंने कल ज्वाइन तो नहीं कर पाया, मेरे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी बीकानेर प्रवास पे है तो ज्यादा समय नहीं मिल पाया ब्रांच के लिए। बट आज जैसे ही मोहित जी से बात हुई तो अच्छा लग रहा है। काफी मोहित जी ने काफी अच्छा प्लेटफॉर्म ये वेबिनार के थ्रू सेट किया है, और होप सो के हम सभी को ही इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। मैं वेलकम करना चाहूंगा आज के स्पीकर, एनर्जेटिक स्पीकर श्री देवेश जी गोयल सर का। होप सो आज का सेशन सुनने के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, नहीं, जो टॉपिक रखा गया है, मैं मानता हूं निश्चित रूप से एक सीए के लिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सभी का पुनः एक बार बीकानेर ब्रांच की ओर से और व्यक्तिगत तौर पे आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ओवर टू राजेश सर, थैंक यू सो मच।
Thank you, sir. Thank you, Ankush ji. Thank you, sir. So now I invite Chairman Shri Ganganagar Branch Shri Dheeraj Kumar Lela ji to deliver, please, his welcome speech. थैंक यू राजेश जी। शब्दों के वजन का उसके भाव से पता चलता है, वैसे तो वेलकम दीवारों पे भी लिखा होता है। मैं ये धीरज कुमार लीला, श्री गंगानगर ब्रांच चेयरमैन, श्री गंगानगर ब्रांच की तरफ से, किशनगढ़ ब्रांच की तरफ से, अलवर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ ब्रांच की तरफ से आज के कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी सीए मेंबर्स, हमारे यशस्वी और एनर्जेटिक प्रेसिडेंट सीए डॉक्टर देवाशीष मित्रा जी, सभी सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स का, सभी सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज के हमारे स्पीकर सीए दिवेश गोयल जी का और सीए जतिन हरजाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेकंड डे अवसर न्यू अपॉर्चुनिटीज और सीए में अपना कीमती समय दिया और हमें उनके आज नॉलेज से रूबरू होने का मौका मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि ये जो आज हम नेक्स्ट 2 सेशन रहने वाले हैं ये नॉलेजेबल रहेंगे और हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। थैंक यू। Thank you, Dheeraj ji. So now I invite CSC Treasurer Rajiv Gupta ji to please deliver his welcome speech. Sir, maybe he's in travel. He will join us. You can proceed to next. Okay. Then, as you all know that Manisha Biyani ma'am is with us and she is today moderator of this session. So I welcome Manisha ji. Manisha ji is a regional council member of 2022 and 25. Everybody knows it. She is first ever elected representative for regional council from the state of Jharkhand and first female chairperson of Ranchi branch in 2020-21. Cleared CA in year 1998 and since then in practice since last 23 years. Presently chairperson of Women Empowerment Committee and CSR Committee of CIRC. She has won the Best Female Cricket Player Award in 2018 in CA Premier League Ranchi, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है कि CA जैसे प्रोफेशन के साथ भी कोई इतना कुछ खेल सकता है. A practicing insolvency professional and presently handling insolvency case of a company based at Kolkata. So I welcome Manisha ma'am. She is a moderator of today's session. So I welcome him and invite her to introduce and welcome session chairman and speaker. CA Manisha Biyani. Thank you, Rajesh ji. I think the session chairman is Central Council member Gyan Chandra Mishra ji. Okay. He is not joined as yet. Yeah, Sumit, is he joining? Sir is joining? So, ma'am, Kishore, actually, sir is not there. And just a minute, I just want to request the tech team, please, जो आपने pin किया हुआ है मोहित जैन के नाम से, उसको आप हटा दीजिए स्क्रीन से, क्योंकि वीडियो दिख नहीं रहा है. Sir, I haven't pinned anything, sir. Yes, sir. क्या बोल रहे हैं मोहित जी? सर एक नहीं आ रही प्रॉपर मेन फ्रेम में जो आती है वीडियो वो प्रॉपर नहीं आ रही है. वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इधर पिन किया हुआ है मेरे वाले नाम को. हाँ तो हटाइए तो फिर मेन विंडो में आ नहीं रही अभी वीडियोस को, तो ठीक है. गैलरी व्यू कर दो ऊपर से व्यू में तो हो जाएगा क्लियर. व्यू में जाके गैलरी व्यू पे क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. Let's continue, sir. मोहित जी हाँ सर, राजेश सर, आगे स्टार्ट करें. यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली. अच्छा मनीषा मैम वेलकम. अपने सेशन चेयरमैन ज्ञानचंद जी शायद नहीं है अभी, तो देन इस अपने को सेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं वेलकम today's learned speaker CA Divesh Goyal ji. Divesh is a fellow member of the Institute of Company Secretary of India, having intense expertise in corporate law for the last 9 years.
He is young and progressive, practicing company secretary. He has done meticulous research and has penned various articles on the Companies Act 2013 to keep at pace with the latest changes and critically discerns the implication of various provisions of the new act. He has co-authored the company law premier book published by the Institute of Company Secretary of India. He was a member of the Task Force Committee and Research Committee for 3 years. He is a member of various committees of NIRC of ICAI. He has deliberated at several forums on corporate law throughout the country. Over the last 2 years, he has deliberated for more than 200 seminars and penned approximately 800 articles on multiple topics of corporate law. So इस तरह से हमारे बहुत लर्नेड स्पीकर्स हमारे आज बीच मौजूद हैं और इस सब का फायदा हमारे सीए प्रोफेशनल्स बंधुओं को मिलेगा। तो आई वेलकम सीए दिव्येश गोयल जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं इनके बारे में 2 शब्द भी कहना चाहूंगा कि इस जीवन का लक्ष्य नहीं है शांत भाव से टिककर रहना, इस जीवन का लक्ष्य नहीं है शांत भाव से टिककर रहना, चलते जाना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं है। तो आई वेलकम सी दिव्येश गोयल जी, और ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज। सर मैं थोड़ा टाइम लूंगा। दिव्येश गोयल जी का बहुत बहुत सर, एंड एक्चुअली जस्ट मिस टू इंट्रोड्यूस किशोर बरड़िया जी, ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ CARC, and sir, without your words of wisdom we can't even go for the next session. Please sir, I just want to take 2 minutes from दिव्येश जी कि आपके सर का विदा हम वेलकम किए। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you sir for granting us permission. Kishore Bhadia ji sir, you are kindly welcome to this session, and we are very happy to see, because you are traveling there, and even though you are joining the session, it's just direct from you sir. Yesterday also President sir joined us like this. It was a great surprise to all of us. It's all yours sir. Please, we want to thank you Mohit ji, respected regional council member Manisha Biani ma'am, आज के स्पीकर CS दिव्येश गोयल जी, चेयरमैन ऑफ द किशनगढ़ ब्रांच मोहित जैन जी, अलवर ब्रांच अमित जी, अंकुश जी, योगेश जी, and Rakesh ji, Dheeraj ji also, and respected members of the ICAI who has joined this webinar on national mode. First of all, I would like to congratulate all the three branches of this Rajasthan who has opted this virtual mode. National conference में virtual mode के through अगर यह प्रोग्राम हो रहा है तो मुझे लगता है कि यह CIRC का एक महाकुंभ है, जिसमें कई सारे मेंबर्स हमारे देश के विख्यात वक्ताओं को सुनने जा रहे हैं, और वो भी बिना किसी खर्चे के। आज बारिश हो रही है बाहर, मैं सोच रहा था कि ऑफिस जाऊं, और ऑफिस जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुझे एक वर्ड ऑफ विजडम देने के लिए कहा गया था, बट मैं घर में ही बैठ के आज अपना यह काम कर पा रहा हूं। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल मोड। तो मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आज CIRC के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा गया है। तो मैं 2 बातें आप मेंबर्स के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि हमारा पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाने जा रहा है, और पिछले कई दिनों से ICAI ने भी एज बीइंग ए पार्टनर इन नेशनल बिल्डिंग हमें भी कुछ काम दिया गया था, और हम भी टैक्स अवेयरनेस के लिए फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी ड्राइव हमारी बहुत सारी ब्रांचेस के माध्यम से, हमारे बहुत सारे मेंबर्स के माध्यम से अलग अलग जगहों में कर रहे हैं, और आगे भी यह कार्यक्रम हम पूरे साल भर करते रहेंगे। तो CIRC के मैं सारे ही ब्रांचेस जो आज हमारे साथ में यहाँ ज्वाइंड है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वे यह प्रोग्राम नहीं कर पाए हैं तो यह प्रोग्राम अपने अपने सिटीज में, अपने अपने चैप्टर्स में ऑर्गेनाइज करें, हमारे देश में जन जागरूकता अभियान फैलाएं, जो कि जिसमें कि ब्रांचेस को और चैप्टर को फाइनेंशियल ग्रांट भी अवेलेबल है। तो डिटेल फाइनेंशियल ग्रांट अगर कुछ जानकारी चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा एक महत्वपूर्ण जो अभी रिव्यू कमेटी ऑन रिव्यू फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसमें कि बहुत सारी शिक्षा नीतियों में बदलाव प्रपोज्ड किया गया है, और 38 जून के पहले हमें मेंबर से फीडबैक और सजेशंस भी चाहिए,
ताकि आने वाली शिक्षा नीतियों को बहुत अच्छे तरीके से हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे मेंबर्स को रेगुलेट करने के लिए बना पाए। क्योंकि हमारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल हमें मिल चुका है और बहुत जल्द हमें इसमें अपने प्रपोजल्स, अपने सजेशंस देने हैं, और ये सजेशंस आते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से हमारी नई नीतियों को कैसे इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि पहले शायद शिक्षा नीतियों का या ट्रेनिंग प्रोसीजर का यह सोचना था कि कहीं ना कहीं किसी शिक्षा नीति को कैसा होना चाहिए, यह सोच हमारी रही भी है, और हम चाहते हैं कि अब हम परिवर्तन करके इसको टेक्नोलॉजिकली हम कैसे अडॉप्ट कर पाए, यह सोचने की जरूरत है। तो मैं पुनः आखिरी में हमारे तीनों ही ब्रांच के, हमारे 5 ब्रांच के चेयरमैन और उनकी पूरी मैनेजिंग कमेटी को बहुत बहुत बेस्ट विशेष देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया, जिन्होंने एक बेंचमार्क इस्टेब्लिश की, जो कि घर बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं, और पूरे कार्यक्रम में जिन्होंने हमारे देश के बड़े बड़े विख्यात स्पीकर्स को लेके आए, मैं इसे CIRC का महाकुंभ मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू किशोर बड़े जी। Am I audible, sir? Yes, sir, you are audible. Okay. Now I invite CA Manisha Biani, madam. Please welcome and say a few words regarding this seminar, and welcome our speaker, Devesh ji. Thank you so much, Rajesh ji. A very good evening to everyone, the dignitaries present here. The session chairman, C. Kishore Bhatia ji, Vice Chairman of CIRC, and CS Devesh Goyal ji, who's the learned speaker of today's session. I have known him since long, and he's been always available for any program we had in Ranchi. I think he's the best, one of the best we have in corporate right now. I also extend my greetings to all the chairmen of the respective branches, Kishangarh, Alwar, Bikaner, Sri Ganganagar, and Chittorgarh branch, for organizing this wonderful conference. Stupendous, I would say. It's like a very well planned, and there are topics of each and every aspect covered here, relating to especially new opportunities which are available to chartered accountants of tier 2 cities. I would also thank CA Mohit Jain, Chairman of Kishangarh branch, for inviting me and making me a part of this wonderful conference. So now, without wasting much of time, I would request CS Devesh Goyal to start his deliberation and enlighten us. Thank you. Thank you, ma'am. So welcome, Devesh ji, please. Thank you. Thank you, ma'am. So first of all, I would like to thanks to the Mohit ji and all the branches for giving me an opportunity to interact with lot of number of members, chartered accountants throughout the country. And thank you, Mohit ji, for on my special request, he have rescheduled my time from 6:30 to this session, because I have to travel to some another city tonight. So thanks to all the chapter chairman, management committee member, Manisha ma'am, and everyone for giving me an opportunity to interact with all of you. And there was one surprise for me. I was not aware that this much so many chapters are joining this. And one name which I listened just now, Sri Ganganagar. So I just want to tell one thing. I'm also belong to Sri Ganganagar. It's feeling so great from my side that I'm today's speaker, and I'm representing all the members from the Ganganagar. Thank you so much for this opportunity. So today the topic which is assigned to me definitely is a very, we can say, useful topic for all the chartered accountant, that is Schedule 3 and compliances of the private limited company. As a chartered accountant, Schedule 3 is, I can say, one of the most important document for us. Why I'm saying one of the most important document? Because Schedule 3 denotes the financial statement. And we all are aware that financial statement is one of the most important document of a company. So it is very important for all of us to definitely to discuss on the Schedule 3 and to understand what are the changes, what are the amendment under the Schedule 3.
because these amendments are gonna impact us on our regular life, day-to-day life in the coming days, because we are in the month of June. We all are aware now, next 3 to 4 months, every professional, every chartered accountant will be busy with preparation of the financial statement. So I must tell you, CIRC and all the chapter, ki at a very great time you have kept this topic, because today it is relevant, today the time when it is relevant to have this topic. Because आज का जो time है, after this webinar, I must say कि everyone is working on the financial statement. So आज जो भी हमें यहाँ से input मिलेंगे, definitely we will use that for our practical working. Just one thing I want to say to all of you, definitely it is a webinar, definitely all the chapters and Moiji have done a great job to connect so many big number of members in this webinar. Just one request to all of you, try to ask as much as query you are having in the Q&A session. So as per my, we can say as per my time through during the session or at the end of the session, I will try my best to take up all the queries. Because generally as a speaker, it's really a great pleasure for me ki whoever is joining this webinar, the queries of such members should be resolved. I think this is the motto of a seminar or motto of a webinar. So जैसा राजेश जी ने बोला, सभी ने बोला कि because of this webinar thing ये COVID से हमें मिली है, but there is a saying ना कि सब चीजें negative नहीं होती, some positive things we got from the COVID. So this webinar thing, these online meetings we received from that, and definitely all the chapters are doing great with these webinars. So I will not take much time on the other things. Let me come toward the topic on the amendment in Schedule 3. These amendment under Schedule 3 came on 24th March 2021. We can say almost 1.5 years back this amendment has came. But till now we have not worked on this amendment, or we can say we are not that much aware about this amendment, because this amendment was not applicable on company financial year ended 31st March 2021. Financial year 31st March 2021, we was preparing the financial statement as per the Schedule 3 before amendment. But as on the 24th March 2021, Ministry have made so many amendments under Schedule 3, and most important thing, all these amendments going to be implemented from 31st March 2022. So this year, whatever financial statement we will prepare for financial year 21-22, whether for any type of companies, OPC, small company, non-small company, public company, listed company, for every type of company, you have to implement these amendments. Or generally, this is my 36th, I can say, webinar plus seminar in the CA Institute on the topic that is Schedule 3. Everywhere I have said one thing. Till now, अगर आप लोगों को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में अगर आप मान के चलते कि 50 आवर्स लगते थे, तो this year you have to tighten your seat belt, because this year you have to take almost 100 hours. But my mean to say, अगर लास्ट ईयर आपने बैलेंस शीट बनाने में जितना टाइम लगाया था उससे डबल टाइम लगेगा इस साल आप लोगों को बैलेंस शीट बनाने के लिए. So make sure whatever we are discussing, please listen carefully, because each and every point is very crucial for a chartered accountant. Because Schedule 3, the financial statement, one of the very important document. Without financial statement, no company can work, no, we can say, entity can work. So it is very important. And generally we know Companies Act is only type of act, or the only entity, the companies, which are having a prescribed format, prescribed guidelines for the preparation of the financial statement. Because जैसा कि हम जानते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स आर देयर, LLPs आर देयर, बट पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें या LLP एक्ट की बात करें, किसी भी एक्ट में ये चीज आपको डिफाइंड नहीं मिलेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं तो क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोजर्स होने चाहिए. ये चीज सिर्फ और हमें सिर्फ मिलेगी कंपनीज एक्ट में. और वन मोर थिंग, एवरी कंपनी हैव टू कंप्लाई. ऐसा नहीं है कि कोई किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनीज को मिनिस्ट्री ने एग्जम्पशन दिया और नहीं दिया. एवरी कंपनी हैव टू कंप्लाई दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. So on 24th March 2021, practically on 24th March 2021, 3 amendments came. One in the financial statement, second in the board report, and third in the auditor's report. So 3 amendment has been made by the ministry on 24th March, and all these amendments going to be implemented from 31st of March 2022. जब भी हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला मेरे सामने क्वेश्चन आता है
कि इन अमेंडमेंट्स का पर्पस क्या है। देखिए, एक चीज अगर हमें से कोई पूछेगा अमेंडमेंट का शेड्यूल 3 की ऑडिटर रिपोर्ट की अमेंडमेंट का पर्पस, शेड्यूल 3 इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक एट लास्ट। बिकॉज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप किसी भी कंपनी का, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक लेमैन हो, जस्ट 100 रुपीज एमसी की साइट पे पे करके आप इंडिया की किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी मच अवेलेबल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनीज। तो अब मिनिस्ट्री ने क्या अमेंडमेंट किया है? मिनिस्ट्री ने जो अमेंडमेंट्स किया है, द अमेंडमेंट व्हिच मिनिस्ट्री हैव मेड, अकॉर्डिंग बाय दोस अमेंडमेंट, मिनिस्ट्री हैव मेड so many new things in the financial statement. One important thing, ministry have not removed or deleted anything. कुछ भी delete नहीं हुआ है, कुछ भी remove नहीं हुआ है. The only thing they have added a lot. और वो जो addition है ना, उस addition पे work करने में no doubt every professional को बहुत सारा time spare करना पड़ेगा. So जो इतने सारे disclosure add on किए हैं, जैसा कि मैंने यहाँ purpose में लिखा, second purpose, adding numerous additional disclosure in financial statements, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, इनका सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा ट्रांसपेरेंसी। बिकॉज जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक एट लार्ज को अवेलेबल होगी। सो द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट इज द ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक एट लार्ज को बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, गवर्नमेंट को बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, जिसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे कंपनी से मांगने के लिए, बिकॉज everything will be there on the records on their financial statement. और जब इतने सारे चीजें ऐड होती है, जब इतने सारे पॉइंट ऐड होते हैं, तो वी कैन से इट विल इंक्रीज द स्ट्रिंजेंसी इन द कंप्लायंसेस। जितने ज्यादा डिस्क्लोजर ऐड ऑन होंगे प्रोफेशनल्स के ऊपर, कॉर्पोरेट्स के ऊपर, उतनी ज्यादा मिनिस्ट्री की तलवार हम बोल सकते हैं तेज हो जाएगी। सो बिकॉज वी नो जितने डिस्क्लोजर्स आएंगे ना, मिनिस्ट्री की तलवार और प्रोफेशनल के ऊपर बढ़ जाएगी। और आज के टाइम एक चीज जो मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी और एज अ अमेंडमेंट रीडर मैंने जो एनालाइज किया है लास्ट 5 ईयर, मिनिस्ट्री हैव इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट अ लॉट। बिकॉज कुछ भी होता है एवरीवेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू देम। एंड जो अब न्यूमेरियस डिस्क्लोजर एड ऑन हो गए हैं, लीगली हम क्या बोलते हैं, लीगली भी देयर इज द सेइंग, द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। लीगली हम यही टर्म यूज करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अदर साइड जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट नहीं बना रही है, वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये डिस्क्लोजर देना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, बट अल्टीमेटली काम करना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पहले जितनी बैलेंस शीट बनाने में टाइम लगाया है ना, इस साल डबल टाइम लगाना पड़ेगा। और डबल टाइम लगाने का एक और रीजन है, जितने मैं अभी अमेंडमेंट्स बताऊंगा ये तो आपको करने ही है। दिस ईयर आपको 2 सालों पे वर्क करना है। 31 मार्च 22 के लिए तो आप वर्क करोगे, 31 मार्च 22 के फाइनेंशियल तो आप बनाओगे, आपको साइमल्टेनियसली कंपैरेटिव 31 मार्च 2021 के भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इस साल आपकी मेहनत 2 फोल्ड हो गई है। जो नए डिस्क्लोजर 22 के लिए बनेंगे, नए डिस्क्लोजर आपको 21 के लिए भी बनाने पड़ेंगे। So that's why I'm saying कि tighten your seat belt, because chartered accountants को next 3 months सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलने वाला है। इतने ज्यादा अमेंडमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिनिस्ट्री ने इंक्रीज कर दिए हैं। So as I said, 3 अमेंडमेंट्स आए थे, एक से ऑडिटर रिपोर्ट में अमेंडमेंट हुआ, एक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक से डायरेक्टर रिपोर्ट में। मैं अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा पार्ट ऑडिटर रिपोर्ट का भी लेके चलूंगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द शेड्यूल 3 की क्या अमेंडमेंट है। बिकॉज ऑडिटर रिपोर्ट, वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट आर प्रैक्टिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिटर रिपोर्ट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जब भी हम ऑडिटर रिपोर्ट की बात करते हैं, द फर्स्ट पॉइंट, ऑडिटर रिपोर्ट हम सब बनाते हैं, बट कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, विच सेक्शन, विच इज अ गवर्निंग सेक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, if any chartered accountant have to prepare the financial auditor report, they have to prepare it as per section 143 subsection 3. section 143 subsection 3 में जितने डिस्क्लोजर्स हैं, वो सभी डिस्क्लोजर हमें अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में देने होते हैं। प्रैक्टिकली बहुत बार आपने सुना होगा अकाउंटेंट्स को या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या कॉर्पोरेट्स को कि ऑडिटर रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट है। इफ आई विल से दिस, ऑडिटर रिपोर्ट डज नॉट हैव एनी फॉर्मेट। Auditor report is totally based on the disclosure mentioned under section 143 subsection 3. और
फुल फ्लैज ऑडिटर रिपोर्ट बनाने के लिए सिर्फ 143 सबसेक्शन 3 इज नॉट अ इनफ डॉक्यूमेंट, इनफ रिकॉर्ड. You have to follow the rule 11 of the company's audit and auditors rules 2014 also. 143 subsection 3 is given some disclosure which you have to mention under auditor report. Along with that, rule 11 has also given some disclosure which we have to given under the auditor report. So अगर हम बात करते हैं फुल फ्लैज ऑडिटर रिपोर्ट बनाने की, एक फुल फ्लैज ऑडिटर रिपोर्ट आपकी तब प्रिपेयर होगी जब आप सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 प्लस रूल 11 को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे. अगर इन दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं और उसके बेस पर ऑडिटर रिपोर्ट बनाते हैं तो हमारी ऑडिटर रिपोर्ट परफेक्ट बनेगी. अदरवाइज वी कैन नॉट रीच ऑन अ परफेक्शन ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट. सो मिनिस्ट्री ने जो अमेंडमेंट किए हैं ऑडिटर रिपोर्ट में, वो मिनिस्ट्री ने अमेंडमेंट किए हैं वी कैन से इन रूल 11. सो मिनिस्ट्री ने ऑडिटर रिपोर्ट के जो अमेंडमेंट किए हैं वो अमेंडमेंट हुए हैं रूल 11 में. अब रूल 11 क्या बोलता है? रूल 11 में 4 डिस्क्लोजर हैं जो आपको ऑडिट रिपोर्ट में देने होते हैं, ए, बी, सी और डी. मिनिस्ट्री ने पहला अमेंडमेंट क्या किया है? डिस्क्लोजर नंबर डी. डिस्क्लोजर नंबर डी को कंपनी लॉ से रिमूव कर दिया है. डिस्क्लोजर नंबर डी इज रिलेटिंग टू द स्पेसिफाइड बैंक नोट. 2006 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था. सो 16 में डिमोनेटाइजेशन के बाद मिनिस्ट्री एक अमेंडमेंट लेके आई रूल 11 में कि अब सभी ऑडिटर्स को अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट में स्पेसिफाइड बैंक नोट पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. राइट, ये अमेंडमेंट आया था. आज तक एज अ ऑडिटर हम 5 सालों से स्पेसिफाइड बैंक नोट्स के ऊपर अपना व्यू देते हुए आए हैं. बट दिस ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March 2022, you don't have to give the disclosure on specified bank notes. Disclosure on specified bank notes has been totally removed from the Companies Act. So please note down this thing that this year when you will prepare the auditor report, you don't have to give any disclosure on the specified bank note. आपकी auditor report without disclosure on the specified bank note prepare होगी for the financial year 2022 and onwards. This is the first amendment under auditor report. Second amendment में मिनिस्ट्री ने क्या किया है? 3 नए क्लोजेस ऐड कर दिए हैं, ई, एफ और जी. मेक श्योर जो इस साल ऑडिटर रिपोर्ट आप लोग बनाएंगे स्पेसिफाइड बैंक नोट्स को ओमिट कर देंगे. बट जो अनदर 3 डिस्क्लोजर्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो अनदर 3 डिस्क्लोजर्स आपको अपने ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन करने पड़ेंगे. डिस्क्लोजर नंबर 1, इसका पहले मैं रीड करता हूं, देन बैकग्राउंड बताता हूं, देन वी विल कम ऑन इट. It's mentioned that no funds has been advanced or loaned or invested by the company to or in any other person, entity including the foreign entities and the intermediary shall not or by behalf of the company lend or invest to the other person. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? शेड्यूल 3 का जो मैं आज अमेंडमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, उसमें से एक अमेंडमेंट क्या है? वो बोलता है कि मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक डिस्क्लोजर नया देना है. नोट्स टू अकाउंट्स में उन्हें डिस्क्लोजर देना है कि क्या कंपनी ने कोई ऐसा लोन, एडवांस या इन्वेस्टमेंट दिया है जो कंपनी ने जिस कंपनी को दिया है वो एक्चुअल कंपनी के ब्याह पे आगे दे रही है. एग्जांपल लेते हैं कंपनी ए. यू आर ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ए. कंपनी ए हैज गिवन द लोन टू कंपनी बी, बट द पर्पस ऑफ लोन दैट कंपनी बी विल गिव दिस लोन टू कंपनी सी ऑन बिहाफ ऑफ ए. Because of any reason, company A cannot directly give loan, advance or investment to company C. So what company A is doing? They are giving to company B and company B will come give to the company C. अगर कंपनी ने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया है, then management have to mention in their financial statement that company have done such transaction. और नहीं किया तो management have to mention कि company have not done any such transaction. और यहाँ पे जो इन्होंने वर्ड यूज किया है कंपनी ए के लिए कंपनी, कंपनी बी जिसके थ्रू काम हो रहा है दैट इज इंटरमीडियरी, एंड कंपनी सी हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, उनका वर्ड यूज किया है अल्टीमेट बेनिफिशियरी. तो पॉइंट 2i में इन्होंने रिपोर्टिंग की बात की है इंटरमीडियरी कंपनी के लिए कि इंटरमीडियरी कंपनी भी इसकी रिपोर्टिंग करेगी. बट द पॉइंट इज दैट ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है? तो मैं एक बार रीड करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा. बेस्ड ऑन सच ऑडिट प्रोसीजर्स that the auditor has considered reasonable and appropriate in this circumstance, nothing has come to their notice that has caused to believe them the representation made by is misstatement.
अब ऑडिटर रिपोर्ट में स्टेटमेंट देना है इस साल दैट कि जो मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट दिया है दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज नॉट अ मिस स्टेटमेंट। अगर मिस स्टेटमेंट है तो ऑडिटर मेंशन करेगा दैट इज मिस स्टेटमेंट। अगर मिस स्टेटमेंट नहीं है तो ऑडिटर विल मेंशन कि द auditor will specifically mention that whatever statement given by the management is correct। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या आता है, आप एक कंपनी ए के ऑडिटर हो, आपकी कंपनी ने बी कंपनी को लोन दिया है, एडवांस दिया है या इन्वेस्टमेंट दिया है, ये चीज आप चेक कर सकते हो, फाइनेंशियल से चेक करोगे, टैली से चेक करोगे, डाटा से चेक करोगे, बट आप ये कैसे चेक करोगे कि कंपनी बी ने उसका क्या यूज किया है? क्या कंपनी बी ने कंपनी ए के बिहाफ पे किसी को दिया है, या कंपनी बी ने अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है? इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो प्रैक्टिकली क्या है, सिंपली सेइंग एज अ ऑडिटर ऑफ कंपनी ए आई डोंट हैव एनी राइट ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी बी। सो कंपनी ए के कुछ डॉक्यूमेंट्स को मैं चेक कर सकता हूं। एज वी नो कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को लोन देती है ना, तो सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट रेजोल्यूशन पास होता है, और वही ऐसी दूसरी कंपनी है जिसमें हमारा कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो आपको सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है। तो ऑडिटर्स को क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर्स शुड चेक देयर बोर्ड मिनट्स, ऑडिटर्स शुड चेक द मिनट्स ऑफ द कंपनी कि कंपनी ने जो लोन दिया है उस लोन के लिए कहीं कंपनी ने रेजोल्यूशंस में तो ऐसा नहीं लिखा ना कि कंपनी बी विल गिव इट टू द कंपनी सी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी ए। दिस इज द फर्स्ट सोर्स फॉर द ऑडिटर। सेकंड सोर्स, अगर कंपनी ने कोई एग्रीमेंट एंटर किया है कंपनी बी के साथ, दैट एग्रीमेंट इफ दे हैव मेंशन्ड कि दे विल गिव दिस लोन टू कंपनी सी, then these are the two documents which a auditor can check। बट इसके अलावा ऑडिटर के पास कोई वे आउट नहीं है। ऑडिटर हैव टू रिलाई ऑन द मैनेजमेंट कि उन्होंने ऐसा कोई लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है जो ऑडिटर्स ने आगे कंपनी बी ने आगे यूज किया है। सो इवन आई सेड वन थिंग, आपके ICAI ने भी गाइडेंस नोट निकाला है स्पेसिफिक पॉइंट पे। इट इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को वो गाइडेंस नोट डेफिनेटली रीड करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ इस पॉइंट को उन्होंने क्लैरिफाई किया है। बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट कि अगर कंपनी ने ऐसा ट्रांजैक्शन किया है, ऑडिटर को उस पर स्टेटमेंट देना है, मतलब ऑडिटर को उसके ऊपर प्रॉपर ऑडिट करनी है उस पॉइंट की। दिस इज अ न्यू डिस्क्लोजर, ये इस साल हर कंपनी के ऑडिटर रिपोर्ट में आपको लिखना है, चाहे आपकी एक OPC है, चाहे आपकी एक स्मॉल कंपनी है, चाहे आपकी एक नॉन स्मॉल कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, जो भी ऑडिटर आप जिस भी कंपनी को, आपको ये डिस्क्लोजर इस साल देना पड़ेगा। इस साल ये डिस्क्लोजर आपको देना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। दिस इज वन डिस्क्लोजर नंबर 1 विच इज न्यूली एडेड। डिस्क्लोजर नंबर 2, इसके बाद डिस्क्लोजर नंबर 2 है हमारे पास whether the dividend declare, F point है, whether the dividend declare or paid during the year by the company is in compliance with section 123 of the Companies Act। अब क्या है, मिनिस्ट्री ने ना लास्ट 5 सालों में, एज आई कैन से ऑल द सीनियर मेंबर आर सिटिंग हियर और यू मस्ट हैव noticed it, in last 5 years ministry have increased the responsibility of the auditor in many folds। जैसा कि कारों में उन्होंने सेक्शन 185 पे ऑडिटर से रिपोर्टिंग मांग ली है, सेक्शन 186 पे रिपोर्टिंग मांगते हैं, सेक्शन 197 पे रिपोर्टिंग मांगते हैं। अब ऑडिटर रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोल दिया है कि ऑडिटर हैव टू गिव अ डिस्क्लोजर इन द ऑडिटर रिपोर्ट, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है then company has complied with the provision of the section 123। तो ऑडिटर को ये डिस्क्लोजर देना है स्पेसिफिकली कि ऑडिटर की कंपनी ने अगर डिविडेंड दिया है तो कंपनी ने पूरा कंप्लायंस किया है सेक्शन 123। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, डोंट टेक इट अदरवाइज, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी आर द प्रोफेशनल, मोस्टली प्रोफेशनल, वी आर नॉट अवेयर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी। बट आज तक इस चीज को हमने ज्यादा फोकस में नहीं लिया था बिकॉज हमें कहीं इतनी ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं करनी थी। बट अब सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव टू लर्न दैट कि डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो उसको पे करने का क्या प्रोसेस है। एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव टू लर्न दिस, अदरवाइज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट गिव अ डिस्क्लोजर, कैन नॉट गिव अ रिपोर्ट, कैन नॉट गिव अ प्रॉपर वी कैन से फेयर एंड ट्रू व्यू ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट। जैसा कि मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जब एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जब भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त एक प्रोविजन है कि वंस अ कंपनी विल डिक्लेयर अ डिविडेंड, डिक्लेयर करने के 5 डेज में एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन होगा और उस सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा और वहां से कंपनी पैसा ट्रांसफर करेगी शेयर होल्डर्स को।
अब जनरली क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज क्या करती है कि 2 ही शेयर होल्डर है, दे थिंक कि हमें क्यों सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना है, हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं. दिस डायरेक्ट ट्रांसफर इज द नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. सो कोई भी chartered accountant, you all are present here, as Mohit ji has already said ki yesterday almost more than 2000 members were joining this webinar, so I'm hoping ki today there is also some same numbers. So it's my request from all the chartered accountants, please before completing a audit this year, please read the section 123, because jab tak section 123 read nahi karenge, it is not feasible for us to understand ki kya kya compliance check karne hain, और जब तक कंप्लायंस चेक नहीं करेंगे हम इस पॉइंट पर प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं दे सकते. सो दिस इज द सेकंड न्यू एडिशन ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट दिस ईयर. थर्ड न्यू एडिशन पॉइंट जी, दैट इज रिलेटिंग टू द ऑडिट ट्रेल. वो इस साल एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज मिनिस्ट्री ने ऑडिट ट्रेल को ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया है 1 अप्रैल 2023 पर. तो जो ऑडिट ट्रेल वाला प्रोविजन है ये जी, ये आपका 23-24 की फाइनेंशियल्स पे लगेगा. सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग द ऑडिटर रिपोर्ट. ऑडिटर रिपोर्ट में 3 चेंजेस है. नंबर 1, specified banknote point will be deleted. Number 2, the disclosure on the misstatement by the management have to be given. Number 3, disclosure on the dividend you have to be give. So this is the new amendment. This is the current amendment in the auditor report. Hope it is clear to everyone. Even if anyone have any question, any query, again I am saying ki question answer option is there in your this presentation. You can mention your question. Last 15 to 20 minutes, I will take up all the questions raised by the members. So auditor's report is a very important document as a chartered accountant. So you all should understand this point. किसी को कोई भी इस point पे doubt आता है, please freely you can ask me, because I am a person, even as a speaker, I appreciate if anyone will ask the question, because it's not only motivate you, it's also motivate me. कि yes, people are asking the question, they are interested to understand the method. Now let's move toward the schedule 3. I tell you, sometime recently in a seminar, one person said कि sir आपने जो schedule 3 समझाया है, now it's become a nightmare for us, because इतने ज़्यादा amendment आ गए हैं ना कि we are feeling कि how we will do it. So let's start on discussion on the schedule 3. Schedule 3. Schedule 3 are divided into 3 parts: division 1, division 2 and division 3. जो भी आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो ना, चाहे वो नील कंपनी है, चाहे 1000 करोड़ टर्नओवर्स में है, चाहे वो ओपीसी और स्मॉल कंपनी है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी है, एवरी कंपनी जिसकी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर होती है. वन थिंग. अब शेड्यूल 3 एज आई सेड की डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. अब आपको ये देखना है कि आप जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं वो कंपनी आउट ऑफ दिस 3 कौन से पार्ट में फॉल करती है. डिवीजन 1 में फॉल करती है, या डिवीजन 2 में फॉल करती है, या डिवीजन 3 में फॉल करती है. डिवीजन 1. अब डिवीजन 1 किससे रिलेटेड होती है? डिवीजन 1 उन कंपनीज पे लगता है जिन कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 मींस एएस एप्लीकेबल होते हैं. तो जिन जिन कंपनीज पे एएस एप्लीकेबल होते हैं, दे हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर डिवीजन 1. और इंडिया में आप सभी को पता है एटलीस्ट 90% ऑफ कंपनीज ऐसी है जिन पे एएस एप्लीकेबल होते हैं. तो ऑल दोज 90% ऑफ कंपनीज विल प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर डिवीजन 1. नाउ डिवीजन 2. Division 2 is applicable on those companies on which Indian accounting standard Ind AS is applicable. If Ind AS is applicable on your company, you have to prepare the financial statement as per Division 2. Division 3. Division 3 is applicable on a company which is NBFC plus, on whom Ind AS is applicable. So it is very important for all the chartered accountant to get clearance कि आपकी कंपनी को कौन सी डिवीजन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है. क्या आपकी कंपनी को डिवीजन 1 के अकॉर्डिंग बनाना है, या डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग बनाना है, या डिवीजन 3 के अकॉर्डिंग बनाना है. डिवीजन 1 एएस पे लगता है, डिवीजन 2 इंड एएस पे लगता है, डिवीजन 3 एनबीएफसी प्लस इंड एएस पे लगता है. होप इट इज क्लियर टिल नाउ. नाउ डिस्कस वन बाय वन द अमेंडमेंट. क्या अमेंडमेंट आए हैं? ओके, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, रेलेवेंट है, मैं अभी ले लेता हूं. समवन आस्क्ड कि आर दिस अमेंडमेंट आर आल्सो एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी. So sir, I will say कि not only private company, even the small private company, even the OPC, these amendments are applicable to everyone. मिनिस्ट्री ने कहीं भी कोई एग्जम्पशन नहीं दिया. मतलब एक कंफ्यूजन का स्कोप होता है ना, यहाँ स्कोप नहीं है.
There is no scope of confusion. These amendments are applicable to each and every type of company. So be clear in your mind, each and every type of company have to comply with these amendments. First amendment, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, all should understand it. फर्स्ट अमेंडमेंट में मिनिस्ट्री ने बोला प्रोविजन फॉर द राउंडिंग ऑफ. अभी तक आप सब लोग बैलेंस शीट बनाते हो, बहुत सारी कंपनीज की बैलेंस शीट बनाते हो. अगर मैं बोलता हूँ 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने आज ज्वाइन किया है, तो कम से कम 50,000 बैलेंस शीट बनती है इन पर्सन से जो आज मेरे सामने यहाँ प्रेजेंट है. आज तक आप बैलेंस शीट बनाते हो, राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन ऑप्शनल था. आप अगर राउंडिंग ऑफ करना चाहते थे तो आप करते थे, राउंडिंग ऑफ नहीं करना चाहते तो आप नहीं करते थे. राउंडिंग ऑफ प्रोविजन वाज टोटली ऑप्शनल टिल डेट, बट नाउ इट बिकेम मैंडेटरी. From this year, financial year ended 31st March 2022. Now rounding off is mandatory for everyone. इस साल से आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपको राउंडिंग ऑफ करना है या नहीं करना. इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन यू कि आपको राउंडिंग ऑफ में ही बैलेंस शीट बनानी है. और राउंडिंग ऑफ के लिए मिनिस्ट्री ने क्राइटेरिया दिया है. दे मेंशन इफ योर टोटल इनकम इज लेस देन 100 करोड़. एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे फोकस कीजिएगा. टोटल इनकम. जनरली आप किसी भी कंप्लायंस की बात करोगे ना, कंपनीज एक्ट में वर्ड यूज होता है टोटल टर्नओवर. यहां मिनिस्ट्री ने अनदर गेम प्ले किया है. दे हैव यूज्ड द वर्ड टोटल इनकम. मतलब अब सिर्फ बिजनेस इनकम नहीं, बिजनेस इनकम प्लस कोई इंटरेस्ट इनकम प्लस कोई रॉयल्टी अगर आ रही है प्लस कोई रेंट इनकम आ रही है, ऑल द इनकम इन कंबाइंड यू हैव टू रिसीव चेक हियर. सो जो राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन है वो टर्नओवर बेस्ड प्रोविजन नहीं है, वो टोटल इनकम बेस्ड प्रोविजन है. Now the provision said, if your total income is less than 100 crore rupees, अगर 100 crore rupees से less तो आपकी टोटल इनकम है, then जो आपको राउंडिंग ऑफ करना है वो नियरेस्ट 100 में होगा, नियरेस्ट थाउजेंड्स में होगा, नियरेस्ट लैक्स में होगा, मिलियंस में होगा और डेसिमल्स में होगा. डेसिमल 0. ठीक है, ये तो हो गया लेस देन 100 करोड़. बट अगर आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, then your rounding off will be in the nearest lakhs, millions, crores और decimals. मतलब अगर एग्जांपल के लिए आपकी टोटल इनकम 500 करोड़ है तो आप उसको 100 या थाउजेंड्स में राउंड ऑफ नहीं कर सकते. then you have to mandatorily round off in the lakhs, millions, crores और decimals. so this rounding off provision is now became mandatory for all type of companies. हर तरह की कंपनी पे ये राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन अब मैंडेटरीली एप्लीकेबल हो गया है. अब एक छोटी सी चीज और बोलना चाहूंगा. आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी लॉ के लिए भी बनाते हैं. कंपनी लॉ में तो मिनिस्ट्री ने राउंडिंग ऑफ मैंडेटरी कर दिया है, बट जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हैं वहां पे राउंडिंग ऑफ फिगर नहीं लिख सकते. देयर यू हैव टू मेंशन द एक्चुअल फिगर्स. तो प्रैक्टिकली क्या होगा, आपको एक बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, एंड यू हैव टू प्रिपेयर द अनदर बैलेंस शीट एज पर द कंपनी लॉ. बिकॉज कंपनी लॉ के लिए राउंडिंग ऑफ की बैलेंस शीट बनेगी, इनकम टैक्स के लिए आपकी नॉर्मल बैलेंस शीट बनेगी. Am I clear on this? So now this rounding off is totally mandatory for every company. और एक चीज, इस साल के लिए तो आप राउंडिंग ऑफ बनाओगे ही, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट जो रखी है ना उसको भी राउंड ऑफ कर लो, बिकॉज कंपेरेटिव फिगर देने के लिए काम आएगी. राउंडिंग ऑफ आपको दोनों सालों की करनी पड़ेगी. आज सुबह मेरा एक सेमिनार था NIRC में. वन पर्सन आस्क कि सर ये राउंडिंग ऑफ प्रोविजन हमें क्या जो वी कैन से कि जो फ्रंट पेज ऑफ द फाइनेंशियल्स पे देना है, नोट्स टू अकाउंट्स में भी करना है. सो आई मस्ट टेल यू राउंडिंग ऑफ इज एप्लीकेबल ऑन द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, everywhere you have to do this rounding off. So now rounding off is mandatory for each and every type of company. There is no exemption. There is no exemption from the rounding off to any company. सभी कंपनीज के ऊपर राउंडिंग ऑफ एप्लीकेबल हो गया है. कोई भी कंपनी राउंडिंग ऑफ से अपने आप को सेव नहीं कर सकती. नेक्स्ट आता है एडिशनल डिस्क्लोजर. अब मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि बैलेंस शीट में क्या क्या नई चीजें एड ऑन हो गई है. सबसे फर्स्ट चीज जो एड ऑन हुई है वो हुई है शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स. आज तक आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में आप मेंशन करते हो शेयर होल्डिंग ऑफ द शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% ऑफ द शेयर कैपिटल, राइट. यही चीज मेंशन होती है कि 5% से ज्यादा जो शेयर होल्ड करते हैं उनकी हमें राउंडिंग डिटेल देनी पड़ती है. बट हमें एक नई डिटेल देनी पड़ेगी शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर.
अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, यू कैन मेंशन द आंसर इन द चैट बॉक्स, हु आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी? बिकॉज जब तक हमें ये नहीं पता होगा ना प्रमोटर कौन होते हैं, हम ये शीट नहीं बना पाएंगे कभी भी. So that's why I just want to ask, who are the promoter of the company? You can answer in the chat box easily, no issue, everyone. Okay, someone mentioned section 2 clause 69. Okay, anyone else, who are the promoters of the company? अगर आज एक मैनेजमेंट आपसे पूछती है, आपको बैलेंस शीट बनानी है कि प्रमोटर्स कौन है हमारी कंपनी के, जनरली हमारे माइंड में एक कंसेप्ट होता है, the person who have incorporated the company is the promoter of the company. Yes, someone has mentioned the same answer, who have formed the company. Yeah, generally हमारे माइंड में कंसेप्ट होता है the person who has subscribed the MOA, right? Like someone has answered here, promoter are investor who are basically subscriber of the memorandum, who incorporate the company, control the affair of the company. तो यही कंसेप्ट हमारे माइंड में आता है प्रमोटर वर्ड को सुन के. बट 1956 एक्ट तक अगर ये कंसेप्ट माइंड में आता था तो मैं बोलूंगा आप लोग प्रॉपर अपडेटेड है. बट 2013 एक्ट में कंसेप्ट ऐसा नहीं है. 2013 एक्ट में कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है. यहाँ पे उन्होंने लिखा, अगर कंपनी ने जिस पर्सन का नाम पब्लिक ऑफर देते वक्त अपने लिखा है डॉक्यूमेंट में, वो प्रमोटर है, तो पब्लिक ऑफर तो बहुत कम कंपनी देती है जो लिस्टिंग के लिए जाती है. 95% कंपनी तो उसमें फॉल नहीं होती. तो सेकंड दे सेड, promoter means a person whose name you have mentioned as a promoter in your annual return. Annual return सब फाइल करते हैं, all the companies. 2014 से MGT 7 फाइल होता है एनुअल रिटर्न के लिए, सभी कंपनीज फाइल करती है. मतलब अगर आप 20 कंपनी के ऑडिटर है, 50 कंपनी के ऑडिटर है, 50 की 50 कंपनीज एनुअल रिटर्न फाइल करेगी ही करेगी, मैंडेटरी कंप्लायंस है. आज तक आपने एनुअल रिटर्न फाइल की होगी, बट कभी इस चीज पे फोकस नहीं किया होगा कि एनुअल रिटर्न में आपने प्रमोटर किसे दिखाया है. But now first time you have to focus कि एनुअल रिटर्न में आपने प्रमोटर किसे दिखाया है. बिकॉज अगर इस साल आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे, आपको देखना है यार मेरी कंपनी के प्रमोटर है कौन. तो पहला सोर्स है कि आप उसका लास्ट ईयर का MGT 7 ओपन करो. MGT 7 में जिसको प्रमोटर दिखाया है उसको प्रमोटर दिखाओ, उसका नाम यहाँ मेंशन करो, उसके नंबर ऑफ शेयर मेंशन करो, उसके परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर मेंशन करो, उसके लास्ट ईयर से शेयर्स में इस साल में क्या चेंज आया है वो मेंशन कर दो. अब दूसरी चीज होती है, आज तक तो एनुअल रिटर्न बनाते वक्त हमने फोकस ही नहीं किया था कि हम किसको प्रमोटर दिखा रहे हैं. जब हम यहाँ फिगर डालने लगे, देन मैनेजमेंट सेड कि नहीं, इस पर्सन को प्रमोटर नहीं दिखाना है. उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैं एक एडवाइस दे रहा हूं, आप करंट डेट में कंपनी का एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाओ. उस बोर्ड रेजोल्यूशन में नोट करवा दो कि दीज आर द पर्सन शैल बी कंसीडर एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी. एक तो क्या होगा, एज अ ऑडिटर जब आप ऑडिट करोगे आपको इजी रहेगा बेस बनाने के लिए कि प्रमोटर्स कौन है, क्योंकि आपके पास बोर्ड रेजोल्यूशन है. दूसरा, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यू कैन चेंज दैट. तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाओ, उसमें पर्सन का नाम मेंशन करो, हु विल बी द प्रमोटर, वो पर्सन का नाम यहाँ लिखो, प्लस एनुअल रिटर्न जब फाइल करोगे उसी पर्सन को एनुअल रिटर्न में भी प्रमोटर दिखाओ. अब आपके सिचुएशन आ सकती है कि मैनेजमेंट ने बोला कि मिस्टर ए कंपनी के डायरेक्टर है, आप इनको प्रमोटर दिखाओ. दिखा सकते हो, लो में कहीं मना नहीं है. लो नोवेयर इज सेइंग कि प्रमोटर बनने के लिए शेयर होल्डिंग चाहिए, नहीं चाहिए. तो आप उस पर्सन को यहाँ पे प्रमोटर दिखाओ. अब होगा क्या, जब आप उस पर्सन को यहाँ पे प्रमोटर दिखाएंगे तो वो डायरेक्टर है, उसके पास शेयर होल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर में आपको नील लिखना पड़ेगा. बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसका नाम ही नहीं लिखेंगे, बिकॉज यू हैव टू गिव द डिस्क्लोजर कि दीज आर द 2 और दीज आर द 5 प्रमोटर, और इन 5 प्रमोटर का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है और उनकी जितनी शेयरिंग होल्डिंग है वो मैंने यहाँ लिख दिया है. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्रमोटर की शेयर होल्डिंग इस साल से आपको अलग से देनी है और ये टेबल प्रॉपरली बनानी पड़ेगी. अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ने एक और पॉइंट ऐड कर दिया, हियर द मैनेजमेंट शैल डिटेल सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर. हर क्लास ऑफ शेयर के लिए सेपरेट टेबल बनेगी. मान लो आपकी कंपनी ने इक्विटी इशू किए हुए हैं, प्रेफरेंस भी इशू किए हुए हैं, इक्विटी के लिए अलग टेबल बनाओगे, प्रेफरेंस के लिए अलग टेबल बनाओगे. और प्रेफरेंस में भी अगर 2-3 अलग अलग क्लासेस के इशू किए हैं, लाइक कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, डिफरेंट डिविडेंड रेशो के साथ, उन सभी की डिफरेंट टेबल्स आपको बनानी पड़ेगी. और मैं अगेन एंड अगेन पूरे सेमिनार में एक चीज बोलूंगा, इस साल डबल मेहनत होगी.
इस साल की फिगर्स के लिए तो बनाओगे, लास्ट ईयर के फिगर्स के लिए भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नोट्स टू अकाउंट्स में कंपेरेटिव फिगर देना होता है। तो वी विल गिव फॉर 31st March 2022 as well as 31st March 2021. This is the first new disclosure. अब आप लोग टाइम काउंट करते जाइएगा बैलेंस शीट बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। सेकंड इज ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल। ट्रेड पेबल का एजिंग शेड्यूल आपको देना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट में। अभी एजिंग शेड्यूल क्या है? होप दिस टेबल इज विजिबल टू यू। दिस टेबल इज आवर एजिंग शेड्यूल। आपको अपने क्रेडिटर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। एमएसएमई क्रेडिटर अदर देन एमएसएमई, फिर 2 कैटेगरी डिस्प्यूटेड एमएसएमई, डिस्प्यूटेड अदर्स। तो 4 कैटेगरी में पहले आप क्रेडिटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करो, कौन से एमएसएमई है कौन से अदर्स है। फिर उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करो, एमएसएमई में कौन से ओके है कौन से डिस्प्यूटेड है, अदर्स में कौन से ओके है कौन से डिस्प्यूटेड है। 4 कैटेगरीज हो गई। अब उसके बाद इन 4 कैटेगरीज को अनदर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करो, किसमें लेस देन 1 ईयर वाले कौन से हैं, 1 ईयर से 2 ईयर वाले, 2 ईयर से 3 ईयर वाले और मोर देन 3 ईयर वाले कौन से हैं। सो डोंट यू थिंक ये बनाने में काफी मेहनत जाने वाली है? बिकॉज इतनी सारी डिटेल्स मेंशन करने के लिए लॉट ऑफ एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब देयर इज अ वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूट? देखो, हो सकता है मैनेजमेंट ने जब बैलेंस शीट बनाई उन्होंने तो किसी भी ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट में डाल दिया और आपको बोल दिया ये डिस्प्यूटेड है, बट एज अ ऑडिटर मैं कैसे बिलीव करूंगा कि ये डिस्प्यूटेड है? तो अकॉर्डिंग टू मी डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि जो डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन है वो डिस्प्यूट कोई रिटर्न मेल के थ्रू, कोई रिटर्न लेटर के थ्रू रेज किया हुआ हो। प्रैक्टिकली ओरल डिस्प्यूट को एज अ ऑडिटर मैं डिस्प्यूट नहीं मान सकता। तो जब भी आप ये टेबल बनाएंगे मेक श्योर जहां भी डिस्प्यूटेड लिखे देयर शुड बी सम बैकिंग ऑफ दैट डिस्प्यूट, देन ओनली वी कैन से इट इज डिस्प्यूटेड। सो दिस इज अ न्यू शेड्यूल एडेड दिस ईयर। ये शेड्यूल सभी कंपनीज पे लगेगा। थर्ड अमेंडमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स एजिंग शेड्यूल। अभी हमने बात की थी ट्रेड पेबल्स एजिंग शेड्यूल को, अब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स एजिंग शेड्यूल। ट्रेड रिसीवेबल्स एजिंग शेड्यूल में भी 4 पार्ट्स हैं। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर गुड्स, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर डाउटफुल, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर गुड्स, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर डाउटफुल। तो आप अपने डेटर्स को भी अपने रिसीवेबल्स को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड करोगे और इन 4 कैटेगरी में करने के बाद देन यहाँ पे तो अनदर 5 कैटेगरीज में डिवाइड होगा। लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर, 2 ईयर टू 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। सो दीज आर द, मतलब आप देख रहे हैं ना कि लेवल ऑफ वी कैन से ट्रांसपेरेंसी, कि ट्रांसपेरेंसी का क्या लेवल होने वाला है। जब आप इतनी इंफॉर्मेशन दे दोगे तो ट्रांसपेरेंसी विल बी एट अ नेक्स्ट लेवल फॉर यू, नेक्स्ट लेवल फॉर द स्टेक होल्डर्स। दीज आर द 3 अमेंडमेंट्स। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अमेंडमेंट नंबर 4, टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। यहां पे मिनिस्ट्री बोलती है द कंपनी शैल प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी whose title deeds are not held in the name of the company, whose immovable property is jointly held by the company with another. Detail are required to be given to the extent of the company share. अब यहाँ पे मिनिस्ट्री को क्या करना है, अब सॉरी प्रोफेशनल्स को क्या करना है, अगर कंपनी की ऐसी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो टाइटल डीड कंपनी के नाम पे नहीं है, जनरली प्रिफरेंशियल लीज के केसेस होते हैं, या बहुत बार कंपनी जॉइंट वेंचर में प्रॉपर्टी परचेज करती है बट पर्सन का नाम तो किसी और का होता है, but ultimately the company is also owner of that immovable property, उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ऑडिटर्स को मतलब बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ऑडिटर्स को अभी बहुत इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वी कैन से कि दिस ईयर बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, where the company has revalued its property, plant and equipment PPE, जहां पे कंपनी ने इन तीनों में से कुछ भी during the year revalued करवाया है, the company shall disclose to whether the revaluation is based on the valuation by the registered valuer or not.
अब कंपनीज एक्ट में हमें पता है 2017 में रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स रूल आ गए थे। 2017 में जब रजिस्टर्ड वैल्यूअर रूल्स आए थे तो उसके बाद क्या हुआ था कि कंपनीज एक्ट से रिगार्डिंग कोई भी वैल्यूएशन आप करवाते हो तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को ही करनी पड़ेगी। ऑल द वैल्यूएशन अंडर कंपनीज एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो यहाँ पे हर कंपनी को एक डिस्क्लोजर देना है कि अगर उन्होंने पीपीई में से कुछ भी रीवैल्यूड करवाया है तो अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिपोर्ट ली थी या नहीं ली थी, उस चीज को आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली क्लियर करना पड़ेगा। एंड दिस 6 नंबर इज द वेरी इंपॉर्टेंट, disclosure of loan and advance to KMP related party directors and promoter। ये एक नई टेबल बन गई है। This is a new table which you have to prepare this year। अब इस टेबल में क्या बोलता है, क्या कंपनी ने अगर किसी भी प्रमोटर्स को, डायरेक्टर्स को, KMP को या रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एंड percentage of the total loans and advance in the nature of loan। ये टेबल इस साल बनानी पड़ेगी कि कंपनी ने इनमें से किसी को भी लोन या एडवांस दिया है, अगर दिया है तो ये टेबल आपको प्रॉपर फिल करनी पड़ेगी। अब जनरली क्या होता है, एक सिंपल क्वेश्चन, क्या कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स को लोन देना अलाउड है? द आंसर विल बी नो। कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स को लोन देना अलाउड नहीं है। लोन टू डायरेक्टर इज नॉट अलाउड अंडर कंपनीज एक्ट। बट प्राइवेट कंपनी को मिनिस्ट्री ने एक छोटी सी एग्जम्पशन दी हुई है कि प्राइवेट कंपनी अगर 3 कंडीशन फॉलो करती है। कंडीशन नंबर 1 कि आपकी कंपनी में किसी दूसरी कंपनी का स्टेक नहीं है। कंडीशन नंबर 2 आपका जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन है वो ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं है। कंडीशन नंबर 3 आपने किसी भी लोन के रिपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। अगर आप तीनों कंडीशन फॉलो करते हो तो उस केस में आप डायरेक्टर्स को लोन दे सकते हो। अगर कंपनी ने लोन टू डायरेक्टर दिया तो कंपनी को यहाँ शो करना पड़ेगा। यहाँ पे लोन टू डायरेक्टर शो करने का बहुत क्लियर कट मीनिंग है कि कंपनी ने सेक्शन 185 का नॉन कंप्लायंस किया है। सो दिस इज अ न्यू टेबल एडेड दिस ईयर। अब एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे रिलेटेड पार्टी लिखा है कि रिलेटेड पार्टी को अगर कोई लोन या एडवांस दिया है, दिस रिलेटेड पार्टी एज पर कंपनीज एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ जो रिलेटेड पार्टी यूज हुआ है ये रिलेटेड पार्टीज एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वन मोर थिंग, कुछ लोगों ने ना क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में पूछा हुआ है, प्लीज आप चैट बॉक्स की जगह अपने क्वेश्चंस को Q&A में डाल दो, बिकॉज चैट बॉक्स में मिसप्लेस हो जाएगा, हम क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे। सो माय क्वेश्चन, रिलेटेड पार्टीज एज पर कंपनीज एक्ट और AS, मेरे पास कुछ आंसर्स आए हैं। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, बहुत कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट। सो जितने भी आंसर आए हैं एक ही आंसर मिला है मुझे कि जो भी हमें यहाँ पे रिलेटेड पार्टी की डिटेल देनी है दोज एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो इतनी सी रिलेटेड पार्टीज है, 7-8 तो ट्रांजेक्शन है जिनको रिलेटेड पार्टी मानते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ICAI ने इसके ऊपर गाइडेंस नोट इशू किया है। गाइडेंस नोट में बहुत स्पेसिफिकली लिखा है यहाँ जो रिलेटेड पार्टी का मीनिंग है दैट इज एज पर AS 18। सो यहाँ जो AS 18 के अकॉर्डिंग रिलेटेड पार्टीज होती है उन्हें आपको यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो मुट्ठी भर भी नहीं होते हैं रिलेटेड पार्टी, सिर्फ 8 ट्रांजेक्शन है, पर AS 18 इज द बंच ऑफ रिलेटेड पार्टीज नेम्स। सो यहाँ पे जो रिलेटेड पार्टी की हम बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे एज पर AS 18। होप इट इज क्लियर। आई एम ट्राइंग की जो छोटी छोटी चीजें आज तक जो 35 सेमिनार मैंने दिए हैं शेड्यूल 3 पे, वहां लोगों से जो मिला आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। So this is a new schedule you have to prepare, and you have to prepare for both year, last year or this year in this financial statement. Disclosure number 7, details of the Benami property held. यहाँ mention किया है any proceeding has been initiated or pending against the entity under the Benami Transaction Prohibition Act 1988। पहली चीज ये डिस्क्लोजर उसी केस में देना है जब आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है या आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है। अगर कोई प्रोसीडिंग ही नहीं हुई है अभी तक तो आपको ये डिस्क्लोजर नहीं देना। ये डिस्क्लोजर तभी देना या तो कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है या कोई इनिशिएट हो गई है, उस केस में आपको डिस्क्लोजर देना है कि डिटेल ऑफ सच प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द ईयर ऑफ एक्विजिशन, अमाउंट डिटेल,
डिटेल्स ऑफ द बेनिफिशियरी, ये सब डिटेल उस केस में आपको देनी पड़ेगी। डिस्क्लोजर नंबर 8, डिटेल्स ऑफ बोरोइंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पर्पस से, तो थोड़ा फोकस के साथ सुनिएगा। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ द कंपनीज हैज बोरोड फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट, कंपनी ने किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और करंट एसेट एज अ सिक्योरिटी दी, जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन में होता है, रेगुलर डे टू डे ट्रांजेक्शन में भी होता है, राइट? उस केस में whether quarterly return or statement of current asset filed by the company with the banks or financial institution are in the agreement with the books of accounts. आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम यहाँ फ्रेंकली प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं। यू ऑल आर अवेयर, जितनी भी कंपनीज ये क्वार्टरली करंट एसेट स्टेटमेंट देती है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करके देती है बैंक को? पता चलता है बुक्स ऑफ अकाउंट में तो स्टॉक कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, बट स्टेटमेंट चला गया। जो मेरा एक्सपीरियंस है, 90% ऑफ कंपनीज जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स सबमिट करती है बैंक्स को, दे डोंट मैच इट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट यहाँ मिनिस्ट्री ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब नाउ उन्होंने मेंशन किया कि आपने बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो क्वार्टरली स्टेटमेंट दिया है फॉर करंट एसेट, अगर एट द एंड ऑफ द ऑडिट इफ देयर इज डिफरेंस between the figures of the books of account and between the figures you have submitted with the banks, then आपको उसका एक reconciliation बनाना पड़ेगा और reason देने पड़ेंगे why there is a material discrepancies। ये वाला provision definitely hit करने वाला है सभी को, because all the companies, सभी companies के accountants जो internal accountants होते हैं वो कुछ भी statement फाइल करते हैं। अब इस साल जो कुछ भी statements फाइल किए हुए हैं उन सभी के ऊपर एक हम बोल सकते हैं कि तलवार गिरने वाली है, कि जो कुछ भी फाइल कर दिया था। अब जब आप ऑडिट करेंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे, एट दैट टाइम यू विल सी कि यार आपने जो डिस्क्लोजर दिया था, कंपनी ने बैंक को डिस्क्लोजर दिया था, और जब ऑडिट के टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी, उस क्वार्टरली डाटा को जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करते हो, फिगर्स आर नॉट मैचिंग, देन आपको एक रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा और रीजन देना पड़ेगा कि डिस्क्रिपेंसीज क्यों है। तो प्रैक्टिकली you all have to educate your clients कि जो क्वार्टरली स्टेटमेंट देते हैं ना, वो आंख बंद करके नहीं देना है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग देना है। अगर आंख बंद करके दोगे तो ईयर एंड में जब आप यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी डालोगे तो नेक्स्ट ईयर बैंक ही आपको सबसे पहले पकड़ लेगा कि आपने हमें जो स्टेटमेंट दिया है वो रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। मिनिस्ट्री तो बाद में देखेगी, गवर्नमेंट बाद में देखेगी, सबसे पहले जो आपको पकड़ेगा ना, बैंक पकड़ लेगा कि आपने रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। Are we clear till here? Point number 11. Oh, sorry, एक point miss हो गया। Detail of borrowing, then था willful defaulter. Where a company is declared as a willful defaulter, where a company is declared as a willful defaulter by any bank, by any financial institution or other lender, then you have to give the date of declaration of willful defaulter, details of the default. तो विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट एवरी ईयर आरबीआई भी इशू करता है, बैंक्स भी इशू करते हैं, तो आप लोगों को भी चेक करना पड़ेगा एज ऑडिटर मैंडेटरी कि आपके किसी क्लाइंट का नेम तो विलफुल डिफॉल्टर में नहीं आ रहा है ना। देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, और इंपॉर्टेंट से ज्यादा ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोविजन है। मिनिस्ट्री ने क्या बोला, रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनीज, whether company has transaction with any company which is struck off, then company को इतनी डिटेल देनी है। स्टॉक ऑफ कंपनी का नेम लिखो। ट्रांजैक्शन विद स्टॉक ऑफ कंपनी, क्या आपने किसी स्टॉक ऑफ कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? क्या कोई रिसीवेबल्स है, क्या कोई पेबल्स है, या स्टॉक ऑफ कंपनी आपकी शेयर होल्डर है, या कोई अनदर ट्रांजेक्शन आपने उनसे किया हुआ है? तो उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 31 मार्च 2022 का, वो मेंशन करिए, प्लस रिलेशनशिप मेंशन करो, आपका क्या रिलेशन है स्टॉक ऑफ कंपनीज के साथ। अब इशू क्या होता है, आपने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 कंपनीज के साथ डील्स की, कुछ रिसीवेबल्स थे, कुछ पेबल्स थे, इन्वेस्टमेंट थे, अदर थे। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को आप देखते हो कि 10,000 तो नहीं बट 1,000 मेरे ऐसे पर्सन है, ऐसी कंपनीज है, किसी का रिसीवेबल्स खड़ा है, किसी का पेबल्स आउटस्टैंडिंग है, किसी का शेयर आउटस्टैंडिंग है, कुछ और है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपसे पूछूं
कि 1000 कंपनीज है, आप बताओ कि इनमें से कौन सी स्टक ऑफ है, कौन सी एक्टिव है, कैसे सर्च करोगे? एनी सॉफ्टवेयर और एनी फॉर्मूला? मतलब 1000 कंपनीज का अगर मुझे सर्च करना है कौन सी स्टक ऑफ है, कौन सी रिवाइव्ड है, कैसे करोगे? ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ऑडिटर का सबसे ज्यादा टाइम लेने वाली है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी 1000, मैं 1000 का एग्जांपल ले रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकता है, 1000 आउटस्टैंडिंग्स है, रिसीवर्स, पेबल्स या अदर्स, आपको उन हर कंपनी के मास्टर डाटा ओपन करके देखना पड़ेगा उनका स्टेटस क्या है। हो सकता है 1000 में से 2 हो या 5 हो जो स्टक ऑफ हो चुकी है, उनकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। अब ऑडिटर के लिए मेहनत करने का काम क्या हो गया कि वो 1000 कंपनीज का मास्टर डाटा ओपन करके देखना इज अ वेरी बिग टास्क। और एज अ ऑडिटर वी आर नॉट डूइंग ऑडिट फॉर अ वन कंपनी, वी आर डूइंग ऑडिट फॉर 20-30 कंपनीज। तो मल्टीप्लाई करो कितनी 1000 ऑफ कंपनीज का डाटा इस साल आपको चेक करना पड़ेगा। और इस साल तो आपको, इस साल का तो करना ही पड़ेगा, 31 मार्च 21 का भी करना पड़ेगा। तो जो ये वाली टेबल है ना, ये टेबल बनाना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। मैं तो लिटरली बोलूंगा अभी अपने स्टाफ को, अपने कलीग्स को लगा दो कि जितनी कंपनीज की आप ऑडिट करते हो अभी से उनकी एक्सेल शीट्स प्रिपेयर कर लें कि उन्होंने जिनसे ट्रांजेक्शन किया है और आउटस्टैंडिंग है उनका स्टेटस अभी से देख के एक्सेल शीट पे मेंटेन करना शुरू कर दे। बिकॉज अगर आप सोचते हो कि सितंबर मंथ में जाके ये सारा काम हो जाएगा तो इस साल तो पॉसिबल नहीं है। एवरी ईयर आप लास्ट ईयर में जाके बैलेंस शीट बना सकते हो, बट दिस ईयर यू कैन नॉट डू दैट। So this is a very important and a very time consuming task for the chartered accountant this year. So hope it is clear to everyone. और प्रैक्टिकली मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट प्रोविजन डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज इन लेटेस्ट सेमिनार पीपल सेड कि सर आप तो डरा रहे हो। मैंने कहा डरा नहीं रहा हूँ, दीज आर द थिंग मेंशन अंडर लॉ व्हिच यू हैव टू प्रिपेयर इट। अब कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे टाइम देना है, यू हैव टू मैनेज दैट। नेक्स्ट, registration of charge and satisfaction of the charge. Now ministry said where any charges or satisfaction yet to be registered with the registrar of company beyond the statutory period, detail and reason thereof shall be disclosed. अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई लोन लिया जिस पे आपने अपनी सिक्योरिटीज को एज ए एसेट किसी बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया, तो आपको पता है कि इन पे आपको चार्ज क्रिएट करना है। आपका टाइम पीरियड जो चार्ज क्रिएशन और सेटिस्फेक्शन का टाइम पीरियड होता है 30 डेज का, वो आपका 30 डेज का टाइम पीरियड निकल गया है और आपका 31 मार्च भी निकल गया है। 31 मार्च के एंड तक भी आपने फाइल नहीं किया है, तो आप यहाँ पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि वो आपने फाइल क्यों नहीं किया है, रीजन के साथ देना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन मैं जनरल पूछ रहा हूं, चार्ज क्रिएशन मैक्सिमम कितना टाइम है एक कंपनी के पास चार्ज क्रिएशन का फॉर्म फाइल करने के लिए? One answer I have received 365 days, another is 180 days, another is 60 days. So see, 200-250 लोग जूम पे हैं, I can say सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। So we are the professional, हमें एक आंसर पे पकड़ना है। So the purpose of discussion कि अभी हमें भी इन चीजों पे क्लैरिटी नहीं है, बट डिस्क्लोजर देने से पहले आपको ये सेक्शन रीड करने पड़ेंगे, इन पे क्लैरिटी लानी पड़ेगी। किसी ने लिखा है 30+30, someone mentioned 30 days without fine, with fine 180 days। तो मैं क्लियर कर देता हूं, 30 days without any additional fees and maximum time period for creation of charge under Companies Act is 120 days. ना ही 30, ना ही 60, ना ही 180, 120 days is the maximum period for creation of charge. अब इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है, 120 दिन में नहीं किया तो क्या? कंडोन करवाएंगे, कंपाउंडिंग करवाएंगे, क्या करेंगे? This is the only form under Companies Act. अगर आप 120 दिन में फाइल नहीं करते हो तो आपके पास कोई वे आउट नहीं है इसे फाइल करने का। You are having only 120 days. 120 दिन में नहीं हुआ तो चाहे आरओसी के पास चले जाओ, आरडी के पास चले जाओ, एनसीएलटी के पास चले जाओ, किसी के पास पावर नहीं है टू अलाउ यू टू फाइल आफ्टर 120 डेज। तो चार्ज फॉर्म को थोड़ा क्रूशियली हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक तो कहीं रिपोर्टिंग नहीं थी, अब रिपोर्टिंग भी है। दूसरी चीज, व्हीकल लोन्स। बहुत बार आपने देखा होगा कंपनीज व्हीकल लोन लेती है, हाइपोथिकेशन उस पर क्रिएट करती है। हाइपोथिकेशन क्रिएट करते क्या होता है कि वो एसेट पे सिक्योरिटी क्रिएट हो गई है, वो आपकी एसेट है, सिक्योरिटी क्रिएट हो गई है। तो व्हीकल लोन पे क्या चार्ज क्रिएट करना मैंडेटरी है?
समवन मेंशन 120 दिन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल से भी 120 दिन के बाद फाइल नहीं कर सकते। अब जो मेरा क्वेश्चन था, क्या व्हीकल लोन्स पे चार्ज क्रिएट करना मैंडेटरी है? One answer I have received, no. Any other views? So my views is yes. Yes. My view is also same as you, Mohit. व्हीकल लोन पे चार्ज क्रिएट करना मैंडेटरी है। बट अब मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करता हूं, आप देखोगे लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर हु आर नॉट क्रिएटिंग द चार्ज ऑन द व्हीकल लोन। मैंने भी नहीं क्या होता है? मैंने भी नहीं की सर। तो रीजन क्या होता है? कंपनी से अगर मैं बात करता हूं, सर बैंक ने नहीं बोला, बैंक ने इंसिस्ट नहीं किया, तो आई विल से जस्ट अ सिंपल थिंग, अगर आपने चार्ज क्रिएट नहीं किया ना, नॉन कंप्लायंस बैंक का नहीं है, नॉन कंप्लायंस आपका है। अगर मिनिस्ट्री पेनल्टी लगाएगी तो वो आप पे लगाएगी, वो इस चीज पे नहीं जाएगी बैंक ने बोला या नहीं। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कंपनी के कंप्लायंस पूरे करना। तो अगर आप व्हीकल लोन लेते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक से फॉलो करके आप उस फॉर्म को फाइल करो। तो इस साल की ऑडिट में क्या होगा, आई टेल यू कि इस साल तो अब तो चलो सब डिस्कस कर रहे हैं, मान लो आज 2000 लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब सब करेंगे आगे, पर लास्ट ईयर का क्या? लास्ट ईयर तो नहीं हुए थे, अब उसकी रिपोर्टिंग यहाँ करनी पड़ेगी। अब जितने ऐसे व्हीकल लोन्स है या ऐसे लोन्स है जिन पे चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, उन सभी की रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी। और यहाँ पे रिपोर्टिंग का क्या होगा, मिनिस्ट्री देखेगी, उसके बाद लेटर्स आएंगे। मतलब पर्पस क्या है डिस्क्लोजर का, ट्रांसपेरेंसी का? मिनिस्ट्री आपसे सेल्फ डिक्लेयर करवा रही है कि आपने नॉन कंप्लायंस किया है। मतलब आप देखो ना, जब तक नहीं रिपोर्ट करते थे ठीक है, अब आप यहाँ लिखते हो कि मेरी कंपनी ने व्हीकल लोन लिया, चार्ज क्रिएट नहीं किया, मतलब मैंने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि आई एम अ कल्प्रिट, मैंने नॉन कंप्लायंस किया है। और जब मैं सेल्फ डिक्लेयर कर दूंगा तो उसके बाद एक्सपेक्ट करना कि मिनिस्ट्री नोटिस इशू नहीं करेगी इज नॉट अ राइट थिंग। जब हम खुद लिख देंगे कि मैंने ये नॉन कंप्लायंस किया तो मिनिस्ट्री भी नोटिस इशू करेगी। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पता है कब आएगा? जब आप किसी नए बैंक से लोन लेने जाओगे ना, वो आपकी बैलेंस शीट रीड करेगा ही करेगा। वो सबसे पहले बोलेगा यार आपने पिछले चार्जेस तो अब तक क्रिएट नहीं किए हैं, तो हाउ कैन वी बिलीव यू कि जिस प्रॉपर्टी आप हमें एक सिक्योरिटी दे रहे हो वो चार्ज फ्री सिक्योरिटी है। तो मतलब एक तो इम्पैक्ट होता है कि नॉन कंप्लायंस हो गया, दूसरा फाइनेंशियली ये चीजें बहुत इम्पैक्ट करने वाली है। क्यों? बिकॉज आप देखो, ऑल आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पता है विदाउट बैलेंस शीट रीडिंग के कोई भी बैंक लोन नहीं देता है। और जब ये डिस्क्लोजर स्पेसिफिक डल गया है तो बैंक्स की चेकलिस्ट में पहला पॉइंट ये होगा कि बैलेंस शीट खोल के ये पॉइंट पढ़ना है। और जब बैंक देखेगा कि यार इस कंपनी ने तो लोन लिया है बट बैंक के चार्जेस क्रिएट नहीं कर रहा, तो हाउ कैन वी बिलीव कि जिस प्रॉपर्टी को हमें सिक्योरिटी दे रहा है इसको ऑलरेडी कोई लोन नहीं लिया हुआ। तो देन इट विल हैम्पर। उस टाइम पे ये चीज बहुत इंपैक्ट करेगी कंपनी की वी कैन से पोजीशन को, क्रेडिट रेटिंग को और कंपनी के फाइनेंशियल्स को। सो दिस ईयर दिस थिंग जो एड ऑन किया है ना मिनिस्ट्री ने, आई मस्ट टेल यू कि हैट्स ऑफ टू देम कि वो कहां से पॉइंट ढूंढ के उन्होंने बैलेंस शीट में सेल्फ डिक्लेयर करवाए हैं। नेक्स्ट विद कंप्लायंस विद द नंबर ऑफ लेयर ऑफ कंपनीज। आपको पता है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अकॉर्डिंग एक कंपनी 2 लेयर्स ऑफ कंपनी से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ए ने बी में किया, बी ने सी में किया, दैट्स इट। सी डी में नहीं इन्वेस्टमेंट जा सकती। हाँ, एक ही लेयर पे आप कितना भी कर लो, ए के नीचे बी भी है, सी भी है, डी भी है, सेम लेवल पे चलेगा हॉरिजॉन्टली, बट वर्टिकली ए से बी, बी से सी, दैट्स इट। अगर आपकी 2 लेयर से ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि उस कंपनी का नाम लिखो, सिन लिखो, रिलेशन क्या है, क्या डिस्क्लोजर है। तो अल्टीमेटली यहाँ भी आप वही कर रहे हो कि मैं कल्प्रिट हूं, मैंने नॉन कंप्लायंस किया है, मैं लिख के दे रहा हूं। देन यू विल सी कि क्या करना है। नेक्स्ट वन इज ये एक अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, रेशोज। आप यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ रेशोज लिखे हुए हैं, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये 11 रेशो है जो आपको इस साल बैलेंस शीट में देने हैं। मतलब आई टेल यू पर्सनली एज अ प्रोफेशनल, हमें भी इन रेशोज के फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे, जब हम बनाएंगे ना हम भी फॉर्मूलाज फाइंड कर करके बनाएंगे। तो ये 11 रेशो आपको हर कंपनी की बैलेंस शीट में देने हैं। 31/22 के लिए भी कैलकुलेट करने हैं, 31/21 के लिए भी कैलकुलेट करने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूमरेटर भी देना है, डिनोमिनेटर भी देना है। प्लस लास्ट ईयर के रेशो से इस ईयर के रेशो में अगर 25% से ज्यादा का चेंज है तो आपको रीजन देना है कि इतना चेंज क्यों है। मान लो नेट प्रॉफिट रेशो लास्ट ईयर 10 था, इस साल नेट प्रॉफिट रेशो हो गया 13, तो वो 25% से ज्यादा वेरी कर गया, तो उसका रीजन भी देना है कि हमारा ये रेशो 25% से ज्यादा वेरी क्यों किया है।
सो ये वाला जो शेड्यूल है ये भी अपने आप में एक अच्छा टाइम कंज्यूमिंग शेड्यूल रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड एंड शेयर प्रीमियम। कंपनी ने बोरोड फंड्स को, शेयर प्रीमियम फंड्स को कहाँ यूटिलाइज किया है उसका डिस्क्लोजर देना है आपने। नेक्स्ट इज कंप्लायंस विद द अप्रूव्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। अब जो कंपनी मर्जर्स, डीमर्जर्स, अमलगमेशन में जा रही है वो अपनी स्कीम में लिखती है कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या प्रोविजंस फॉलो करेंगे, उनकी रिपोर्टिंग भी आपको स्पेसिफिकली करनी पड़ेगी कि आपने प्रॉपरली उसको कंप्लाई किया है या प्रॉपरली कंप्लाई नहीं किया है। वन थिंग आई अगेन रिक्वेस्ट टू द मेंबर्स, चैट बॉक्स में कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, प्लीज इसे Q&A में मेंशन कर दीजिए ताकि Q&A में होगा तो प्रॉपरली टेकअप हो जाएगा। सो ये जो अभी तक डिस्क्लोजर डिस्कस किए हैं ना, ये सारे तो न्यू एड ऑन्स हैं बैलेंस शीट में। ये सब आपकी बैलेंस शीट में नए डिस्क्लोजर इस साल के लिए एड ऑन हो गए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं P&L के लिए। P&L के लिए क्या क्या नए डिस्क्लोजर्स है। नंबर वन, undisclosed income. The company shall give details of any transaction not recorded in the books of account that has been surrendered or disclosed in income during the year in the tax assessment under Income Tax Act. अगर इस टाइम आपका कोई सर्च हुआ है, कोई इंस्पेक्शन हुई है, उसके अकॉर्डिंग, असेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने कोई इनकम सरेंडर की है, डेफिनेटली वो लास्ट ईयर्स की असेसमेंट इस साल होगी, 21-22 में हुई होगी, तो आपको उसके ऊपर एक स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर देना है कि मेरी जो भी सर्च हुई है, जो भी असेसमेंट हुई है, उसके अकॉर्डिंग दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम आई हैव सरेंडर्ड। ये प्रॉपर डिस्क्लोजर आपको एक नया डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। P&L में नेक्स्ट डिस्क्लोजर आपको देना है CSR के ऊपर। अगर आपकी कंपनी पे CSR लगता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर CSR सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, तो आप CSR की डिटेल्स आज तक डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मेंशन करते हुए आए हैं। आप CSR की डिटेल्स अपने डायरेक्टर रिपोर्ट के एनेक्चर में मेंशन करते हुए आए हैं। CSR के लिए आप CSR 2 फॉर्म फाइल कर रहे थे। अब आपको CSR की डिटेल्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L के नोट्स टू अकाउंट्स पे भी देनी है कि कितना अमाउंट CSR पे स्पेंड करना था, कितना एक्सपेंडिचर कर दिया, कितना शॉर्टफॉल है, प्रीवियस ईयर का क्या शॉर्टफॉल है, रीजन क्या है शॉर्टफॉल के। lot of disclosure, lot of information you have to mention now for the CSR also. So ये सभी इंफॉर्मेशन हमें CSR के लिए मेंशन करनी पड़ेगी। थर्ड डिस्क्लोजर इन द P&L, virtual currency and cryptocurrency. Whether the company has traded or invested in cryptocurrency or virtual currency during the financial year. अगर किया है तो डिस्क्लोजर देना है। Profit and loss on transaction involving cryptocurrency and virtual currency. Amount of currency held at the end of the reporting date, deposit or advance from any person for the purpose of trading or investing in cryptocurrency. मतलब we know India में cryptocurrency investment is not allowed, not a legal thing. मतलब जो चीज नहीं कर सकते वो कर दी है तो खुद ही बता दो कि मैंने कर दिया है, फिर उसके बाद RBI, उसके बाद मिनिस्ट्री विल चेक एंड मिनिस्ट्री विल गिव यू नोटिस कि आपने ये डिस्क्लोजर कर दिया है। So these are the amendment under companies balance sheet and schedule 3. तो schedule 3 and auditors report के तो हमारे जो amendment अभी हमने डिस्कस किए हैं ये सभी amendment है। Just one thing मोहित जी, हमारे पास कितने बजे तक का टाइम है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर को थोड़ा अरेंज कर लूंगा। सर आराम से, we are having time until 6 o'clock. Don't worry. 6 o'clock ना, तो मैं 15 मिनट के लिए compliances को ले लेता हूँ, then क्वेश्चन आंसर को ले लूंगा। Definitely sir, we will open it for all. The participants who are joined from Zoom, I will allow them to raise your hand and they So will after ask. 15 minutes we will do that. आराम से। अभी हमने डिस्कस किया ऑडिटर्स रिपोर्ट और शेड्यूल 3। होप आफ्टर दिस सेमिनार बहुत सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे एडिटर एंड शेड्यूल 3 पे। स्टिल एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर सेमिनार के बाद भी किसी का कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होता है, तो आई विल मेंशन माय नंबर इन द चैट बॉक्स एंड आई विल गिव माय डिटेल्स एट द एंड ऑफ द सेशन। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। So whenever I will be free, I will definitely revert on those queries. Next topic, I will take just 10 to 15 minutes on this so that we can discuss our queries properly. Next is the annual compliance of the private company. मुझे specially request कि सर ये चीज हमें लेनी है because we should be aware कि क्या हमें compliance at least करने हैं। तो जब हम प्राइवेट कंपनी के compliance करते हैं ना,
तो मैंने जो ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया, आई हैव प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द क्वार्टरली। अप्रैल टू जून में क्या मैंडेटरी कंप्लायंस है, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर है, जनवरी टू मार्च। बिकॉज जनरली क्या होता है, जो कंप्लायंसेस मैं इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनी के लिए है। वो चाहे आप एक स्मॉल कंपनी हो, चाहे एक नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनी हो, वो चाहे आप एक पब्लिक कंपनी हो, उसको भी करना है। डेफिनेटली पब्लिक के लिए कुछ और एड ऑन हो जाएंगे, लिस्टेड के लिए और कुछ एड ऑन हो जाएंगे, बट जो कंप्लायंसेस आज इस प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी कंपनी। ये कंप्लायंस तो करने ही करने पड़ेंगे, इसमें कहीं हमारे पास रिलैक्सेशन नहीं है। वी हैव टू डू दिस कंप्लायंसेस। समटाइम क्या होता है, मेनी पर्सन आस्क द क्वेश्चन कि सर कंपनी ने कोई बिजनेस ही नहीं किया, नील ट्रांजैक्शन था, तो क्या ये कंप्लायंस करना पड़ेगा? आई विल से यस। जो आज मैं कंप्लायंस डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे नील ट्रांजैक्शन है, चाहे 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन है, इतने तो करने पड़ेंगे, बाकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। सॉरी, वन सेकेंड। सो ट्रांजैक्शन को जैसे मैंने बोला, मैंने इनको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर्स। फर्स्ट अप्रैल टू जून, ऐसे कौन कौन से कंप्लायंस है जो अप्रैल टू जून मंथ में हमें करने ही होते हैं, जिनके लिए हमारे पास कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो पहला कंप्लायंस आता है रिसिप्ट ऑफ एमबीपी 1 अंडर सेक्शन 184 सबसेक्शन 1। एमबीपी 1 बोलता है एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन ईच फाइनेंशियल ईयर शैल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन द अदर एंटिटीज। तो हर कंपनी को अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, और डेफिनेटली फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आप अप्रैल से जून में ही करेंगे, तो हर कंपनी को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में एमबीपी 1 में डिस्क्लोजर लेना मैंडेटरी है। और ऑडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमबीपी 1 में डायरेक्टर क्या बताएगा कि उसके कहाँ शेयर होल्डिंग है, उसकी कहाँ पार्टनरशिप्स है, उसकी कहाँ इंटरेस्ट है एज अ डायरेक्टर। तो जब हम आरपीटी बनाते हैं तो हमें बहुत इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना कि डायरेक्टर कहाँ इंटरेस्टेड है। तो एमबीपी 1 जो ये डॉक्यूमेंट है, आई मस्ट टेल यू, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर शुड डेफिनेटली, स्क्रीन शो हो रही है ना, बिकॉज समवन मेंशन इन द चैट बॉक्स स्क्रीन इज नॉट अपीयरिंग। ओके, यू It's visible, sir. Showing, sir. One is the first document which every company is required to take from their director, और कंपनी को लेना है, कंपनी के कंप्लायंस है, बट मैंने इसके साथ आपको बता दिया कि ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकंड होता है रिसिप्ट ऑफ DIR 2 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164(2) एंड 143। 143(3) किस लिए होता है? ऑडिटर्स रिपोर्ट के लिए। Every director of the company in each financial year will submit with the company disclosure of the non-disqualification. Every director को DIR 8 कंपनी को सबमिट करना चाहिए, जिसमें मेंशन होता है कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूं। और ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है कंपनी से ज्यादा ऑडिटर के लिए। एज ए ऑडिटर जब आप लोग ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट में आप एक डिस्क्लोजर देते हैं ना कि डायरेक्टर्स आर नॉट डिस्क्वालीफाइड, बिकॉज ऑडिट रिपोर्ट के सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लोज जी में लिखा है कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है या नहीं है। तो एक तो होता है कि चलो मैंने मिनिस्ट्री की साइड से भी चेक कर लिया, बट दूसरा एज अ ऑडिटर मेरे पास कुछ बैकिंग होनी चाहिए। तो DIR 8 इज अ बैकिंग फॉर ऑडिटर कि देखो डायरेक्टर ने डिस्क्लोजर दिया है कि ही इज नॉट अ डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर। थर्ड कंप्लायंस इज this is half yearly return under section 405 of the Companies Act MSME 1. Every company have to file this return half yearly in respect of pending payment to the MSME vendor at the end of the half year. अगर कंपनी ने किसी भी MSME वेंडर के साथ ट्रांजेक्शन किया है और कंपनी ने उसकी पेमेंट में मोर देन 45 डेज का डिले किया है, तो उस केस में कंपनी को MSME 1 फॉर्म मिनिस्ट्री को फाइल करना पड़ता है एवरी हाफ ईयर। फॉर द हाफ ईयर अक्टूबर टू मार्च के लिए 30 अप्रैल तक फाइल करना पड़ता है। फॉर हाफ ईयर एंडिंग अप्रैल टू सितंबर के लिए 30 अक्टूबर। जस्ट एक सिचुएशन जहां पे नील है, जहां पे आपने या तो सभी MSME वेंडर्स की पेमेंट टाइम पे कर दी थी, या किसी MSME वेंडर्स की पेमेंट में आपने 45 डेज से डिले नहीं किया, या किसी MSME वेंडर के साथ डील ही नहीं की। नील के केस में ये फॉर्म नहीं फाइल होगा, अदरवाइज चाहे सिंगल ट्रांजेक्शन भी हो आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। फोर्थ कंप्लायंस, yearly return DPT 3 form.
company is required to file this form every year on or before 30th June in respect of return of deposit and particular note considered as deposit. We are in the month of June. आज 18 जून हो गई है, 30th जून तक सभी कंपनी को DPT3 फाइल करना है. So only 12 days are there. I am requesting to all the chartered accountants, please file this form till 30th June. इस फॉर्म में आपको कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन, कोई भी आउटस्टैंडिंग एडवांस as on 31st March का डिटेल देना पड़ता है. These are the mandatory compliance for the quarter April to June. Now let's talk about the quarter July to September. July to September जो हमारे कंपनीज एक्ट का हम बात करते हैं, ऑडिटर्स के लिए बात करते हैं, सबसे क्रूशियल पीरियड होता है क्योंकि फाइनेंशियल इसी पीरियड में बनते हैं. तो जुलाई टू सितंबर में पहला कंप्लायंस होता है अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इस पीरियड में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको अप्रूव करवाने पड़ते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से. सेकंड कंप्लायंस होता है जैसे ही फाइनेंशियल्स बनते हैं फिर आप डायरेक्टर रिपोर्ट बनाते हो. डायरेक्टर रिपोर्ट एज पर सेक्शन 134 आपको प्रिपेयर करना पड़ता है. दिस इज द सेकंड कंप्लायंस ऑफ दिस क्वार्टर. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, डायरेक्टर रिपोर्ट बन गई, तो थर्ड कंप्लायंस होता है नोटिस ऑफ एजीएम बनाना. आप एजीएम का नोटिस प्रिपेयर करोगे. फोर्थ कंप्लायंस होता है नोटिस शेयर करना, सेंडिंग द नोटिस ऑफ एजीएम. आप एजीएम को नोटिस सभी डायरेक्टर्स को दोगे, सभी मेंबर्स को दोगे और सभी ऑडिटर्स को. इट इज मैंडेटरी, चाहे आप इंटरनल ऑडिटर हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, सेक्रेटेरियल ऑडिटर हो, तीनों ऑडिटर्स के पास एजीएम का हर जनरल मीटिंग का नोटिस आना चाहिए. ये चार काम हो गए. पांचवा कंप्लायंस क्या है? जब नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ एजीएम जब आप सर्कुलेट करोगे, नोटिस ऑफ एजीएम के साथ, नोटिस ऑफ एजीएम के साथ आपको सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना पड़ेगा और आपको सर्कुलेशन ऑफ अदर रेलिवेंट डिटेल्स को भी शेयर करना पड़ेगा. सो पहला काम इस क्वार्टर में क्या करना है? डायरेक्टर रिपोर्ट बनाओगे, सॉरी पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, क्योंकि देयर इज अ सीक्वेंस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद आपकी ऑडिटर रिपोर्ट बनेगी, ऑडिटर रिपोर्ट बनने के बाद आपकी डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी. तीन कंप्लायंस हो गए. जब ये तीनों चीजें पूरी हो जाएगी, नोटिस ऑफ एजीएम बनेगा. पांचवा कंप्लायंस नोटिस ऑफ एजीएम, डायरेक्टर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट के साथ सर्कुलेट होगा. सिक्स कंप्लायंस फिर आप होल्ड करोगे एजीएम. एवरी ईयर आपको 30 सितंबर तक एजीएम होल्ड करनी पड़ती है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. लास्ट 2 सालों से कोविड के कारण मिनिस्ट्री ने रिलैक्सेशन दी और इस साल भी रिलैक्सेशन है कि आप चाहो तो अपनी एजीएम फिजिकल मोड में कर सकते हो और चाहो तो अपनी एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हो. इस साल भी ये अलाउड है. एंड इस क्वार्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस होता है एनुअल फॉर्म DIR3 KYC. ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल फाइल फॉर्म DIR3 KYC on or before 30th September every year. तो 30th सितंबर तक आपको DIR3 KYC भी फाइल करना पड़ता है. So these are the 7 compliances. 4 पहले क्वार्टर में थे, 7 इस क्वार्टर में है. These are the 7 compliances which you have to do between July to September. Hope whatever I am discussing it is getting clear with everyone. Again I am saying, आप लोगों का कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, you can ask to me after the seminar on my WhatsApp number. मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर भी कर दूंगा. इवन मेरा कुछ WhatsApp ग्रुप भी है प्रोफेशनल्स के लिए, जस्ट टू रिजॉल्व द क्वेरीज एंड शेयरिंग ऑफ अपडेट. आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, आई विल ऐड यू इन दैट आल्सो, बिकॉज़ द ओनली पर्पस ऑफ ऑल दिस थिंग टू शेयर नॉलेज विद एवरीवन. अब आते हैं थर्ड क्वार्टर पे, अक्टूबर टू दिसंबर. प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा कंप्लायंस होते हैं पहले 2 क्वार्टर में. अब थर्ड क्वार्टर में क्या है? हमारी बैलेंस शीट रेडी है, हमारी डायरेक्टर्स रिपोर्ट रेडी है, हमारी ऑडिटर्स रिपोर्ट रेडी है, हमारी एजीएम हो चुकी है. अब एजीएम से रिलेटेड कंप्लायंस थर्ड क्वार्टर में पहला कंप्लायंस होता है फाइलिंग ऑफ एनुअल फॉर्म AOC फॉर्म. कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स बैलेंस शीट along with the statement of profit and loss account, cash flow statement, directors report and auditors report in this form within 30 days of holding the annual general meeting. एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने के 30 डेज में आपको ये सब फाइल करने पड़ते हैं अपने डायरेक्टर्स ROC के पास. 30 डेज का टाइम होता है. 30 डेज के बाद 31st डे से आपके ऊपर 100 रुपीज की एडिशनल फीस लिवाए हो जाती है. सेकंड कंप्लायंस इस क्वार्टर का होता है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. एवरी कंपनी विल फाइल इट्स एनुअल रिटर्न. Every company will file its annual return within 60 days of holding of annual general meeting. मतलब टिल हम मान के चलते हैं 29 नवंबर तक सभी कंपनीज को MJD 7 फाइल करना होता है.
These are the compliances for the quarter 3. अब बात करते हैं क्वार्टर 4 जनवरी टू मार्च. प्रैक्टिकली एक जनवरी टू मार्च ऐसा क्वार्टर होता है जिसमें कोई एमसी की ड्यू डेट नहीं है, कोई एमसी का मैंडेटरी कंप्लायंस नहीं होता है. अभी हमने डिस्कस किया क्वार्टरली कंप्लायंसेस. कुछ कंप्लायंस ऐसे हैं जो आफ्टर द क्वार्टर भी आपको करने पड़ते हैं, जैसे कि बोर्ड मीटिंग्स. Every company shall hold at least 4 board meetings of the board of director every year in such a manner that maximum gap 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो हर कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग मैंडेटरी है और स्मॉल कंपनी के केस में 2 बोर्ड मीटिंग. Maintenance of the statutory register. There are some register I have mentioned: register of director, register of member, register of transfer, register of director shareholding. These are the some mandatory register जो सभी कंपनीज को प्रिपेयर करने होते हैं. And last one, auditors. Appointment of auditor. Every company have to file ADT1 for the appointment of auditor. हमें पता है कंपनीज एक्ट में ऑडिटर अपॉइंट होते हैं 5 इयर्स के लिए. कंपनीज एक्ट में ऑडिटर्स 5 इयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं. तो every 5 year we have to file the ADT1 with the Ministry of Corporate Affairs for the auditor. So within every 5 years we have to file this with the Ministry of Corporate Affairs. So this is all from my side for the today's session. We have discussed about the amendment under auditor reform. We have discussed about the amendment under Schedule 3, and we have discussed in a frequent manner about the annual compliances. First thing, some person has asked for the presentation. Both of these presentation I will share with the Mohit ji. He can share with all the chapter chairmen, and you can share with everyone, all 2000 members who are joining there. Except किसी की कोई query, कोई doubt हो, you can freely ask to me. Now I am taking one by one question. First mentioned under the Q&A. First question is there: whether loan from director or promoter will be included in debt while calculating the debt equity ratio. So that is the debt. According to me, it is every type of debt we are considering here. Question number 2: are there any exemption for private limited companies as per 185? सर 185 सेक्शन बोलता है कि आप अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते, बट प्राइवेट कंपनी के लिए एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया था 13 जून 2017 को. 13 जून 2017 को एक नोटिफिकेशन आया था. उसमें मेंशन थी कुछ कंडीशन. अगर आप उन्हें फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग एन एग्जम्पशन फ्रॉम द सेक्शन 185. नेक्स्ट क्वेश्चन, someone asking for the examples of the rounding off. सर राउंडिंग ऑफ का एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल आपका कोई एक्सपेंस किया, आपने एक्सपेंस की फिगर थी 25,560. तो आपको अगर उसे 100 में राउंड ऑफ करना है, 25,000 तुम 560 की जगह आप 600 मेंशन करोगे. तो लाइक दिस यू हैव टू राउंडिंग ऑफ ऑल योर फिगर्स. गाइस वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज आस्क एज मेनी एज क्वेश्चन यू कैन आस्क, बिकॉज यही टाइम है जब आपके डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो. जो अपॉर्चुनिटी इस प्लेटफॉर्म पे हमें मिली है टू डिस्कस विद ऑल ऑफ अस, सो यू शुड यूज इट. नेक्स्ट इज whether the responsibility for disclosure of management and TCWG, can the auditor believe on the management representation letter? Now I want to discuss one thing as all the dignitaries are present here. Generally क्या होता है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइम MRL लेते हैं. Just I want to take your view because you all are the London members are or another members are there. MRL का कितना relevant है? Whether a MRL can save us from the proceedings? Anyone can give your view. Mohit ji, you can also share your views. Because हमेशा ये क्वेश्चन जरूर आता है, बिकॉज जब इतने डिस्क्लोजर देने होते हैं ना, तो आता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली तो क्या MRL ले ले. See, practically what is my experience, I am the part of the some committee of the ministry also. MRL is having no value. बस MRL एक ही चीज के लिए बेनिफिशियल है कि अगर कहीं डिफॉल्ट होता है तो हम ये शो कर सकते हैं कि वी आर ऑल नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. बिकॉज आप ये सोचो कि MRL के बेस पे हम बच जाएंगे, तो नेवर. अभी रिसेंटली इन दिल्ली की मैं बात करता हूं, 600 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिनिस्ट्री ने नोटिस इशू किया. 600 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बैलेंस शीट के बेस पे. अब वो जो नोटिस है ना, इफ आई विल टेल यू द पॉइंट्स, ऐसे ऐसे पॉइंट्स है कि यू विल से कि MRL की कोई वैल्यू नहीं है. एक में ये था कि बैलेंस शीट की फ्रंट पेज की फिगर नोट्स टू अकाउंट से नहीं मैच हो रही है. इसके बेस पर मिनिस्ट्री ने नोटिस इशू किया है कि यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड इट प्रॉपर्ली.
सेकंड हमने देखा पॉइंट देखा, मिनिस्ट्री इज आस्किंग की एक्सपेंसेस हुए इनके डॉक्यूमेंट्स दो. So lot of things are there which ministry is asking these days. So MRL is okay, definitely we should take the MRL because at least we can represent कि ये चीज हम नहीं अपने आप में फाइंड आउट कर सकते थे, तो ये चीज हम नहीं फाइंड आउट कर पाए, इसलिए हमने मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लिया है. But MRL is not 100% safer for us. Next question, what if director give loan to the company? Okay, मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ. प्रैक्टिकली हमें पता है जैसे आपको डीपीटी 3 भी फाइल करना है, उस टाइम सबसे बड़ा क्वेश्चन ही क्या आता है कि कहां से कंपनी को लोन लेना अलाउड है, कहां से नहीं है. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत से लोगों को नहीं है प्रॉपर नॉलेज कि कहां से लोन ले सकते हैं कहां से नहीं. तो जब बात आती है ना लोन फ्रॉम डायरेक्टर इज कंप्लीटली अलाउड अंडर कंपनीज एक्ट, बट विद अ कंडीशन. ऐसा नहीं है कि लोन फ्रॉम डायरेक्टर फुल फ्लैज अलाउड है. लोन फ्रॉम डायरेक्टर मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि फुल फ्लैज अलाउड है. लोन फ्रॉम डायरेक्टर में एक कंडीशन ये है कि लोन फ्रॉम डायरेक्टर इज अलाउड इफ डायरेक्टर विल गिव अ डिक्लेरेशन दैट दिस इज फ्रॉम हिज ओन फंड नॉट फ्रॉम द बोरोड फंड. सो एज अ ऑडिटर जब मैं ऑडिट करता हूं, अगर मुझे दिखता है लोन फ्रॉम डायरेक्टर है, तो we should take the copy of the letter received from the director, because अगर डायरेक्टर लेटर नहीं देता तो प्रैक्टिकली ये लोन अलाउड नहीं है. It will be considered as a deposit. Next question, if present shareholders are different from the promoter who have been mentioned in MOA subscriber, then what to mention under promoter category? Okay, देखो जैसा मैंने पहले बताया था कि ऐसा कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं है कि प्रमोटर वही लोग होंगे जो हमारी इनिशियल सब्सक्राइबर थे, या प्रमोटर वो लोग होंगे जो सब्सक्राइबर शीट सब्सक्राइब की. Promoter can be any director, any shareholder to whom you have designated as a promoter. तो हो सकता है कि आपकी कंपनी में 4 डायरेक्टर और 4 शेयर होल्डर है, उनमें से 2 डायरेक्टर ऐसे हैं जो शेयर होल्डर नहीं है, बट वो आप चाहते हो कि वो प्रमोटर है, आप उनको प्रमोटर दिखाते हो, रेजोल्यूशन भी पास करते हो, तो आप जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग मेंशन करोगे ना, वहां उनका नाम एज अ प्रमोटर मेंशन करोगे, पर उनके सामने शेयर होल्डिंग में नील मेंशन कर दोगे आप. Next question, there is no master list provided by the MCA status of all company one go. Yes, there is no option, there is no search engine कि जहां से हम सर्च कर सकते हैं कि सिंगल गो में कि अपनी कंपनी का नाम डाले और सर्च कर ले कि वो स्ट्राइक ऑफ है या नहीं है. कोई ऑप्शन नहीं है. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लिस्ट खुद को बनानी पड़ेगी हर कंपनी के लिए कि हर कंपनी में जो भी ऐसे आउटस्टैंडिंग्स है एज ऑन 31 मार्च, उन सभी की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन से स्ट्रक ऑफ है और कौन सी एक्टिव है. नेक्स्ट, हाउ वी आइडेंटिफाई ऑल द लोन्स फ्रॉम व्हिच चार्ज आर नॉट क्रिएटेड. ओके, इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा आपको चीज बताता हूं. चार्ज क्रिएट कब करना है, कंपनी लो क्या बोलता है? कंपनी लो बहुत सिंपली बोलता है कि आपको चार्ज क्रिएट करना है उस केस में जब कंपनी ने किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है एंड उस लोन को लेने के लिए कंपनी ने अपनी एसेट को एज अ सिक्योरिटी दिया है. अगर आपने लोन लिया है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. आपने लोन लिया, लोन लेने के लिए डायरेक्टर ने गारंटी दी और डायरेक्टर ने अपनी किसी पर्सनल एसेट को एज अ सिक्योरिटी दी, तो आपको चार्ज क्रिएट नहीं करना है. एक बहुत सिंपल फंडा कंपनी लॉ में क्या है, 2013 एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, कि चार्ज उसी लोन के लिए क्रिएट करना है जिसके लिए आपने किसी एसेट को एज अ सिक्योरिटी दिया है. तो अब जब आप ऑडिट करते हो, डेफिनेटली बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल द डाटा इन फ्रंट ऑफ यू, आप देखो कि कंपनी के आपने जहां जहां लोन लिए हैं, कंपनी के सैंक्शन लेटर को पढ़ो, कंपनी के एग्रीमेंट्स को पढ़ो, पता चल जाएगा इसको लोन लेने के लिए क्या सिक्योरिटी दी है. अगर लोन लेने के लिए कंपनी की एसेट को सिक्योरिटी दिया है तो डेफिनेटली यू हैव टू क्रिएट चार्ज. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था व्हीकल लोन, जब व्हीकल परचेज करते हैं तो इट्स बिकम द एसेट ऑफ द कंपनी. तो व्हीकल लोन को लेने के लिए अगर आपने हाइपोथिकेशन किया है तो चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन मेंशन कि सर अगर कोई लोन ड्यूरिंग द ईयर ही क्लोज हो गया है, इफ चार्ज वाज नाइदर क्रिएटेड नॉट सेटिस्फाइड वेदर डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. सर जनरली ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो विद इन द ईयर ही खत्म हो जाते हैं, बैलेंस शीट में आते ही नहीं है. तो ठीक है, वन केस यू कैन टेक द चांस, बट आई विल नेवर से कि ऑडिटर को चांस लेना चाहिए. कंपनी को सेव करने से पहले मैं ऑलवेज एक चीज बोलता हूं,
always professional should first clear his stake before the company. अब कंपनी ने लेके दे दिया, बट आपको पता है डॉक्यूमेंट में कहीं दिख रहा है, मिनट्स में दिख रहा है, तो यू शुड गिव अ डिस्क्लोजर कि नहीं, कंपनी ने लोन लिया था, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In case of new company, whether subscriber and paid share capital will be shown under change column or beginning column or share capital disclosure. अगर नई कंपनी है, फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट बन रही है, तो आप वहां लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स जो प्रमोटर डिस्क्लोजर है, परसेंटेज. चेंजेस में आप लिखोगे नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस ईयर. हाँ, बट ये हो सकता है आपने साल के शुरू में लेके फिर चेंज कर दिया, देन यू हैव टू गिव अ नोट फॉर द सेम विद दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Delay will be considered in case of MSME from due date or invoice of date. Okay, MSME से जब आप डील करते हो ना, तो आपको MSME एक बोलता है 45 डेज में पेमेंट करनी है, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस. अगर आपने 46 डे की है तो आपका ये डिले माना जाएगा. तो 45 डेज फ्रॉम द इनवॉइस, नॉट फ्रॉम द ड्यू डेट. ओके, समवन आस्क्ड द क्वेश्चन, कैश फ्लो की टर्नओवर रिक्वायरमेंट क्या है? कंपनीज एक्ट में बहुत सिंपली लिखा है कि कैश फ्लो इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर बाय द स्मॉल कंपनी. तो मतलब स्मॉल कंपनी की टर्नओवर इज 20 करोड़ तक. तो अगर आपकी 20 करोड़ से बिलो टर्नओवर है तो आपको कैश फ्लो नहीं बनाना है. समवन हैज नो अमेंडमेंट इन डायरेक्टर रिपोर्ट. सर, डायरेक्टर रिपोर्ट में एक अमेंडमेंट आया है इस साल. उन्होंने सॉरी क्या बोलता है, इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग एक दो क्लॉजेस को ऐड किया है. Next question, sir, whether ADT1 is mandatory for first auditor. As per Companies Act, ADT1 is not mandatory for the first auditor, but it is always recommendatory to file because auditor पर अपॉइंट कर रहे हो तो फाइल करना चाहिए. हाँ, बट इसके बेस पे अगर नहीं भी फाइल करते तो कंपनी मिनिस्ट्री से कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, practically we do stock audit only at the end of the year. So now onward, do we need to do it quarterly? So practically क्या है, at the end of the year करोगे, discrepancies आएगी, रीजन देना पड़ेगा. बेटर है कि उसको हम अगर क्वार्टरली करके चलें तो क्वार्टरली कोई मिस्टेक होगी भी तो उसी टाइम क्लियर हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ऑल्सो एलेबोरेट SIP WIP. ओके, आई विल कम ऑन दैट पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कारो कॉन्ट्रोडिक्टरी. देखो सर, कॉन्ट्रोडिक्टरी है, बट माय व्यू, बट आई हैव स्टडीड, अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है, देन डोंट गो फॉर द पॉइंट्स ऑफ द एग्जम्पशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी. सबसे पहले चेक करो स्मॉल कंपनी है या नहीं है. स्मॉल कंपनी है तो वहीं पे बाहर चले जाओ, बाकी लिमिट्स को छोड़ दो. हाँ, स्मॉल कंपनी नहीं हो तो नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनी हो गए हो, देन वो प्राइवेट कंपनी की लिमिट्स पे जाओ जो कारो की लिमिट्स है, देन चेक कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज? सेटिस्फेक्शन के लिए मैक्सिमम है 300 डेज, बट 300 डेज के बाद भी आप रीजनल डायरेक्टर के पास जाके कंडोनेशन करवा सकते हो, जो चार्ज क्रिएशन में ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर. प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से लोन ले सकती है. कंपनीज एक्ट में लिखा है अप टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, प्राइवेट कंपनी फ्रीली शेयर होल्डर से लोन ले सकती है. बट अप टू 100% से ज्यादा लेना है तो 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि आपकी कंपनी में किसी दूसरी कंपनी का स्टेक नहीं हो, आपकी कंपनी ने जो ऑलरेडी लोन्स लिया हुआ है बैंक्स प्लस बॉडी कॉर्पोरेट से, वो ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपकी कंपनी ने किसी लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, whether the what are the compliance required for holding or subsidiary apart from AOC for CFS? सर देखो, होल्डिंग और सब्सिडी क्या होता है, अगर आप होल्डिंग कंपनी हो, आप कंसोलिडेशन करोगे, प्लस डायरेक्टर रिपोर्ट में भी कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ते हैं उसके लिए. प्रैक्टिकली इसके अलावा कोई अदर फर्दर कंप्लायंसेस नहीं है. कंप्लायंसेस यही होते हैं, दोनों को डायरेक्टर रिपोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देने पड़ जाते हैं. ओके, समवन आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हाट टू डू टू कन्वर्ट अ शेयर होल्डर एज प्रमोटर, विल देयर बी एनी कंप्लायंस? सर आपको कुछ नहीं करना है. आप किसी शेयर होल्डर को प्रमोटर बनाना चाहते हो, एक सिंपल बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो. बोर्ड रेजोल्यूशन में टेक नोट करो कि दिस पर्सन विल बी द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, और उसी में कुछ फाइल नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, preparation of the financial statement is responsibility of the management. If there is default in disclosure, then to what extent auditor is responsible? Sir देखो, disclosure in financial statement is responsibility of the management. Definitely कुछ गलत होता है तो management will be responsible, but auditor is also signing it, auditor is also doing the audit. अगर auditor audit करता है
कुछ गलत है, नॉन कंप्लायंस और ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट कर देता है, तो ऑडिटर के ऊपर कोई इशू नहीं है, दे आर नॉट लाइबल फॉर एनीथिंग। बट ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करता, दे आर लाइबल फॉर द सेम, जो भी लेवल ऑफ डिस्क्लोजर है, नॉन कंप्लायंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज क्रिएटेड इन विच कोलैबोरेटर वाज ऑन रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, लोन इज repaid 12 years before but charge satisfaction is not filed। सर अगर चार्ज क्रिएट हुआ था और 12 साल हो गए आपने सेटिस्फाई नहीं करवाया, तो आज के दिन में सेटिस्फाई करवा सकते हो, CHG 4 फाइल करो, फिर CHG 8 फाइल करके कंडोनेशन करवाओ रीजनल डायरेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 23rd March 2020, ओके, बैंक अकाउंट ओपन ऑन 20 May 22, व्हाट कंप्लायंस आर रिक्वायर्ड। सो अभी लेटेस्ट में बनी है, तो सबसे पहला तो DPT3 फाइल करना, वो 30 जून तक कर लो। ऑडिटर रिपोर्ट फाइल करनी है, बाकी जो रेगुलर कंप्लायंस है वो करनी ही है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट्स करनी है, वो नेक्स्ट ईयर करनी है। समवन आज लेयर्स को वन मोर एग्जाम, लेयर्स को सब डिस्क्राइब करो। जो हमने बात की थी कि 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडीज नहीं होनी चाहिए, देखो ये बात करते हैं वर्टिकली। आप हो कंपनी ए, कंपनी ए ने इन्वेस्ट किया सब्सिडरी में कंपनी बी में, कंपनी बी ने इन्वेस्ट किया कंपनी सी में, अब कंपनी सी आगे इन्वेस्ट अलाउड नहीं है, 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी तक अलाउड है। तो अगर कंपनी सी आगे इन्वेस्ट करती है तो आगे वाली कंपनी की डिटेल आपको देनी है। सो लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स रिलेटिव इज परमिटेड, प्राइवेट कंपनीज को लोन फ्रॉम रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इज परमिटेड, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, वो रिलेटिव डिक्लेरेशन देगा, इट इज फ्रॉम द ओन फंड। Someone mentioned, please explain the maximum amount of the loan which a company can take from shareholder। shareholder का तो मैं डिस्कस कर चुका हूं लिमिट वाइज, डायरेक्टर से कितना भी ले सकते हो, पर डिक्लेरेशन लेनी है कि उसका ओन फंड है। लेयर्स का कंसेप्ट आई हैव डिस्कस्ड। लास्ट क्वेश्चन, कंपनी टेकन ओडी लिमिट अगेंस्ट पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्टर, चार्ज विल बी रिक्वायर्ड। जैसा मैंने बोला था, कंपनी की एसेट को अगर सिक्योरिटी देते हो तो चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, डायरेक्टर की एसेट को देते हो तो चार्ज क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। Can private company take unsecured loan from outsider? Definitely cannot take। अगर ले लेते हैं डिपॉजिट बन जाएगा, काफी हैवी पेनल्टीज है कंपनी सेक्टर उसके ऊपर। So I think all the questions from the chat। One question I would like to ask. Yes, please, ma'am. Sir, if the director EKYC is not done for 2 years, then the penalty is 5,000 once, or for the 2 years it will be like 5,000 once। अगर ऐसा जनरली, हाँ जनरली आपने 10 साल में भी नहीं किया और 10 साल बाद करोगे तो 5,000 ही लगेंगे, और इमीडिएटली करोगे तो भी 5,000 ही लगेंगे। Here it is not year wise, it is one time 5,000 जब भी आप करोगे। There are more questions, I think। Yes, 1 or 2 more questions are there। तो final last 2-3 questions मैं ले लेता हूँ, then we will conclude it। Can a director take loan or invest as share capital? हाँ, शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकता है डायरेक्टर, कहीं से भी लोन लेके, कोई इशू नहीं है। AOPC was formed, but even after many years, capital amount has not been induced by the director shareholder। What are the issues? How we report the auditor report? सर देखो क्या है, कंपनीज एक्ट बोलता है आज की डेट में आप कोई कंपनी बनाते हो और सब्सक्रिप्शन मनी आपको 6 महीने के अंदर आनी चाहिए, 6 महीने में नहीं आती तो आप बिजनेस ही स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट है और उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो आपको ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए, इट इज टोटली अ नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। और समवन आस्क कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2020 में, आज तक कोई कंप्लायंस नहीं किया, क्या डायरेक्टली क्लोज करवा सकते हो? तो करवा सकते हो। कंपनी लॉ में एक प्रोविजन है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। कंपनी लॉ में देयर इज अ प्रोविजन कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके आज तक बिजनेस नहीं किया है तो आप विदाउट एनी कंप्लायंस कंपनी को स्टॉक ऑफ करवा सकते हो, बट एटलीस्ट 1 ईयर निकल गया होना चाहिए आपके इनकॉर्पोरेशन से। So hope we have taken all the queries from all the members। There was a lot of queries, but I try my best to revert on all the queries of the members। Now after the session भी I will say किसी की कोई query, कोई question आता है तो please feel free to ask the questions through my WhatsApp number जो मैंने यहाँ शेयर कर दिया है। बाकी मोहित जी आपको प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे तो उसमें भी मेरा मेंशन होगा, तो that will be shared with you। Thank you so much everyone। Thank you so much for the patience listening also। So you're on mute, and so the session was really great, and we are getting live feedbacks from the Zoom participants even though, and participants are also there on the ICAI TV। They can't reply you here, but they are there। Yes, Wonderful, very thank you very much sir Devesh Goyal ji।
आपका जो उद्बोधन है इतना शानदार रहा है, द फुल ऑफ नॉलेज, फुल पैकेज, एवरीबडी इज, मतलब ये तो बड़ा रिसेंट है क्योंकि इस साल की जो बैलेंस शीट बननी है, एवरीबडी इज कंसर्न विद दिस कारो चेंजेस, बैलेंस शीट चेंजेस, सबको पता है। और आपने कहा है कि अभी से अगर प्रिपेयर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाके, बिल्कुल आपको सर, बहुत बिजी होगा। और आपने बहुत शानदार तरीके से बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ मैं आई रिक्वेस्ट टू मनीषा मैडम प्लीज टू गिव vote of thanks to for deliver vote of thanks. Thank you so much, Rajesh ji. Thank you, Devesh Goyal ji, for such an elaborate session on changes in Schedule 3, point-wise with explanations thereof. It was wonderful. The compliance chart quarter-wise also to file the returns and the forms was very comprehensive. You've answered all the questions, all the queries of the participants of today's session in such a nice way. I think they are much satisfied. I can see the comments that's coming in the comment box. All are very much satisfied with the session. Right. Thanks to CA Kishore Baradia ji, CIRC Vice Chairman, for joining us. All the branches, the chairman, the other committee members of the branches, and above all the participants, enthusiastic participants of today's session, who were there throughout the session and were asking questions. I would like to now welcome CA Rohit Ruwatia ji, Central Council member, dynamic and young personality. So welcome to the thank you. program, sir. Thank you, Manisha ji. Actually, I think I have some internet connectivity problem because I am on travel. So first of all, I am thankful to the chairman of Kishangarh branch, Mohit Bhai, who has given me an opportunity to interact and to chair this session. But probably I am not able to chair, but I'll just share my words because due to the limitation of continuous traveling, and especially I was hearing the session of Divyesh ji since last 15 minutes. So he was very confident, and the way he deliberated all the queries of the members is really remarkable. So I must congratulate that wonderful speaker is there in the session. Rajesh ji is there from Alwar branch, and Vaisab, namaskar. Sir, namaskar. Tarun bhai, my younger brother, and Yogesh Kabra ji is in absentia, and of course Manisha madam, the only female member of the regional council mein, or all the participants of the Zoom who are there attending with me. Very good evening to all, and of course it's a Prayas. I think the name of the conference is Prayas. Avsar. Or Prayas. Avsar, yeah, Avsar. Very good theme, very good name given by the branches, and I have seen all the creatives and the design by which you have gathered so much of efforts that every member, every management committee member is very visible on the stationery which has been circulated in the members. So it is a good move to have a togetherness, to show the unity and to have a strength in totality. So it gives a good message, and I'll urge all the members to continue with the same spirit. And today's session of Jatin ji on GST will be definitely a remarkable one, and I'm sure that the member who have gathered today, who attend the session of Jatin Harjai ji, is from my own city, Jaipur. Even he's my elder brother too. So I'm confident that everybody is going to gain much knowledge related to the GST. And obviously this 3 days conference, the national conference virtually, probably sir, I am not sure, I am seeing this first time in this year that a national conference in this manner is going to happen, and it is happening on the other side. But I think more than 4,000 registrations are there. So it's a wonderful effort by the young team, by the young champs. And once again, I congratulate all the members, all the managing committee members of the Kishangarh branch. Those members, I am not able to take the name, especially thanks to everyone and all the joint branches who are putting together their efforts in making this program a grand success. My best wishes to all the branch members, all the branches. And there are certain more things which I wish to share, but due to some limitation and traveling continuously, so I wish to share on some other day. Right now, my best wishes and shubhkamnaएं sabhi ko. Or thank you very much, Mohit bhai, and everyone present over here. Thank you. I would like to take the opportunity to thank you for even joining this while on travel, and we are getting you
in a different color right now, and we are seeing it. It's just like awesome, sir. Sir, I want to update you all that Jatin sir's session is just next to us, and Divesh Wilson had taken a wonderful session, sir. You just missed it while traveling, but Manisha ma'am had given complete time to attend this session. And sir, all the branch members are very committed, and it's just because of the team spirit of all of us that this program is being conducted in a good manner, sir. And definitely we just want to cover it in physical manner, but as we all are small category branches and to adjoin the people, we are getting this kind of platform from people. This is so fortunate for all of us. Thank you, sir, for joining us. Yes, sir. Thank you. Thank you. And we want to see your branch complete this year only, sir. Yes, sir. You are the Sure, sure. For anything, any support, any help, I am always available 24/7. But Yes, we sir. want the infrastructure of the Kishangarh branch to be completed this year. And Yes, sir. my best wishes to all again. Thank you very much. And I'm sorry that I'm not able to pay much time today. But yes, definitely next time I'll definitely interact, definitely say my words, because it is important for the council member and even the council that the member should get to know what the council is doing. So there are many things which the council is doing which we would like to deliberate via this platform. But certainly due to the limitation, we'll share some other day. A lot of things are happening, a lot good things are happening, and you'll see definitely. And yes, one more thing, there is a CRET, sir. Might be yesterday President sir and the other people would have spoken on the CRET. My humble request to again all the members who are attending, kindly hold their mobile and just put the comment on the new CRET and share the message amongst all the members, all the stakeholders that yes, the new CRET is coming. Kindly go through the new CRET. This will be the future of the profession. So it is important for us. We are trying to build some kind of technological upgradation. We will be incorporating artificial intelligence, data analytics, blockchain accounting, and other things into the curriculum. And a lot many things have been changed. So again request you कि CRET पे सब लोग जरूर से कमेंट करिए. ये हमारे लिए, हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए, हमारे फ्यूचर को बनाने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है सब. Thank you. Thank you very much, Rohit sir. And I would like to hand over the session to Rajesh sir again. And please, I request Manisha ma'am also to please guide the people and participants upon CRAT, ma'am. Actually, the CRAT is very important issue which we have to take care about this. And the institute is continuously taking all the opportunities. Yes, Mohit, you have to organize a program also. It is advised to all the branches to organize an outreach program for the students as well as the members for this CRET, so that it is widely spread. And if there is any suggestions which they want to give, then the 30th June is the last date to send the suggestions and all. So there is a Google form also which is floated. You can float in your branches. All the other chairmen can also float in their branches the Google form, so that this can be done. I think Kishangarh branch has already done that outreach program. Is it? Yes, yes, ma'am. Kishangarh branch has already done. Even we are going to do it on 27th, the Ranchi branch. So this Avsar, I would say, Mohit, it was a brilliant idea for you to float this and have this name. Actually, Avsar New Opportunities is the crux of today's. Like there are dearth of opportunities for the young chartered accountants. The traditional practices are going down. So if we have new areas which are coming up, so then that will be very good and lucrative areas also. Like yesterday also I heard that the vice president was saying that the PTC committee headed by CA Kamisha ma'am, the central council member, is doing wonders. That they are creating a lot of job opportunities, and I think it will be very good for the profession in this coming year. Yes, yes, ma'am, definitely. Ma'am, I want to update you. Gyanchand Mishra sir is also coming and joining us in a few moments. And just a minute. Can you extend a vote of thanks, formal vote of thanks to Divesh sir till he is joining us? Yes. Thank you so much, Divesh sir, for joining today, taking out time and elaborating us and enlightening us on the topic, which is like the burning topic of today, because this has to be reported in this audit which is coming up so for the financial year 21-22. It will be a great help. You said that you'll be sharing the PPT. That will be wonderful.
easy for us to comply with them. Definitely. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you for. Okay, thank you. Thank you, Devesh sir. Thank you. Ma'am, you just stay here. Gyanjan sir is about to come. I'm just interrupting between again and again. Rajesh sir, please hand over the session to Tarun, and Tarun. It's all yours. Now the next session is at 6:30, I believe. Yes, ma'am. It's about 6:30. So I think Jatin sir will join us on that time about 6:30. So I would also like to add something like I have done the insolvency professional. And right now I'm practicing also. So this is quite a good opportunity for people who have done their 10 years of chartered accountancy. And don't think that if you are in a small city, things won't come to you and you'll be just sitting with that degree. But things turn up in few months or so. And right now also I'm handling a case of Calcutta-based company who's into NCLT. And so basically it's very interesting and keeps you going every time. A lot of laws involved and the corporate thing. I mean, even GC Mishra sir has joined us. He is also an insolvency professional. He can also throw some light. He has been practicing since I think few years. Welcome, sir. Sir, you're mute. So thank you, madam. How are you? Sir, I'm good. How are you? Great, madam. I was just talking about insolvency as a new field which has come up. So then you joined. I know that you are also practicing insolvency. So you can put more light because you have been practicing since few years. I've just joined last year only. I've completed and I'm handling a case right now. So okay. Okay. See, insolvency really emerged as one of the good practicing areas up now, and we are expecting that the horizon will increase as and when the partnership and proprietorship firm will be included in the same. However, as of now, also lot of area for the chartered accountants in insolvency are encouraging in practice, like direct practicing as an insolvency professional or claim verification, representation. Sir, I think there is some NCLT area that is going to happen. Claim verification. Voice issue, I think. So, am I audible, madam? Yes, sir. Now you're audible. It was breaking in between. Okay. So insolvency as such is certainly one of the major area practice for chartered accountants as of now. And we have witnessed, though the main object for which the Insolvency Act came is not totally in line to the expectation of the government and the gist of the law. But still, we see that insolvency has emerged one of the great field of practice for the professionals at large. And this may vary from very small to appearing before the relevant authorities, NCLT and NCLAT. Claim verification is one of the major area. I think the voice is breaking. Yes, there again. Their services benefit verification to the. So I think we must have some you can say 45 minutes on our system. On this, I will request the chairman of Your voice is breaking in between. Please take your time to get the reconnected. Voice is not clear. Breaking in between, sir. Yes, sir. It's now sir, it's clear, sir. Sir, It was actually continue, disconnecting in between. Now it's clear, sir. Sir, Now it's clear. continue with video off, sir. But to explain you, sir is traveling on Eastern India. Sir is telling that sir is in Guwahati, I think, and maybe possible
while traveling and giving such time to conferences. It's hats off to you, sir. Just try and take your time. We can manage you, but want to listen you. Yes, it would be better that you plan one session on the insolvency matters, because insolvency is one of the major area of practice, as well as the vision of the government as of now, how they are going to benefit the ill units and how the maximization of the assets of the companies could be taken place. Yes, I think Kirti is also joined. Welcome, Kirti. Yes, Kirti sir has also joined up. Yeah, I think he's on mute or something like that. Now, Kirti. So I would like to end with a few lines, Mohit. So Chairman sir, I congratulate you and your entire team, Manisha madam, and all the respected office bearers of the branch. And please allow me, I have some more meetings. So I'm thankful to each and every one of you for inviting me. Though I could not attend in time today, I was traveling at that time. I am seeing that your seminar has been a hit, and lot of people are there, and still at about you can say 6:30 p.m. A lot of people are still waiting to listen the learned speakers and of course the office bearers. Thanks to you, you are joining us, and without you, the galaxy is just incomplete, sir. And we are just about to listen to you, sir, just because the voice is breaking. Now it's the connection is, I think the connection is very good. And sir, we just need your words of wisdom. Without you, your words of wisdom. Yes, sir, Thank you, Chairman, sir. I have just put up my video because what is happening, some network issue is here. So at the outset, I'm thankful for inviting me. And this is one of the best structured seminar you have organized. 2 days, this national conference. I'm sure this is going to benefit all the members at large. Friends, the session in which I was supposed to join, the CARO and Schedule 3, is really the show of this year, because lot of challenges are going to happen for the chartered accountants who are practicing in company law, and of course to the auditors while conducting the audit. This is because the type of changes the government has bring in CARO, those need to be deliberated well. Otherwise, what is going to happen, the report what will be submitted, if there are certain discrepancies in the report, that is going to hammer at large to the stakeholders like auditors as well as to the corporate houses. As you can see that changes with regard to the, especially 2-3 points I would like to cover. Deemed loan and advances. That is very, very crucial to audit. How you are going to capture the deemed loans and advances. Related to the internal audit, related to the resignation of the auditor. Resignation of the auditor, again, one of the very crucial points. There should be very genuineness and genuineness to prove how and why the auditor has resigned. What was the basic reason? What could be deliberated by the client and the auditor that has been taken place or not. So I think this CARO is really going to be a game changer with respect to the presentation of the financial statements on part of the financial statement makers and on part of the auditors. We have to make it sure that whatever comment and whatever audit observations we are putting in, that should be at part to the
knowledge, skills, and the requirement of the government agencies and regulators. So I'm sure that this is going to benefit all the members and friends. The profession has come a long way. I will not take much time. Surely it would be always a pleasure to interact with you. One thing very important that I want to share with you. We all are chartered accountants and all are brand ambassador of the institute. Don't think that 32 council members and 64 regional council members and about 2,000 branch managing committee members are only the torch bearers. Each and everyone is torch bearer, and this is the time when we have to prove ourselves that whatever we are doing, the society is eyeing at us. Hence, we have to deliver to the best interest of all stakeholders of the community and society at large. I will not take much time. This is indeed a pleasure to me to interact you again and again. But I congratulate the branch, each and every managing committee members, and under the leadership of Mohit Bhai, and I congratulate to Manisha Madam, Kirti Bhai, and all the participants to attend this wonderful program. Thank you, Chairman, for this wonderful initiative. Thank you very much, sir. Thank you a lot. What do you, ma'am? So to all the participants also, I have given my contact details in the comment box. So if there is any support, any help which is required, you people are always welcome to contact me. And also I would like to end with a few lines said by Zig Ziglar. Your attitude, not your aptitude, determines your altitude. So friends, positivity and gratitude takes you far and it gives you immense satisfaction. So now signing off and over to Rajesh ji. Thank you. Thank you, madam. बहुत बहुत बढ़िया और बड़ा शानदार ये सारा सेशन रहा और मेरे ख्याल में टाइम भी हमारा को परमिट नहीं कर रहा है कि हम इसको और आगे कुछ करें और बाय द एंड अपने और डिग्नेटरीज को इसमें ज्वाइन किया उससे इसका सेशन का और ग्रेस जो है और बढ़ गया ज्ञानचंद जी भी आ गए रोहित जी भी आ गए तो इट्स नाइस और मेरे ख्याल में अब मोहित जी आप बताएं कि नेक्स्ट सेशन के लिए आप प्रोसीड करें और सबको बहुत बहुत धन्यवाद सब पार्टिसिपेंट्स को सब डिग्नेटरीज को और खास तौर से स्पीकर को जो बहुत शानदार तरीके से सबको अपडेट किया थैंक यू वेरी मच ओवर टू मोहित जी Thank you, Rajesh sir. Thank you a lot. And without too much of time of yours, I just want to invite Kirti Joshi ji from Indore and Dr. Arun Modi is from Kishangarh and working, shining in Jaipur. I just want to hand over the session to Tarun Bhai and Kirti Bhai. And I request Kirti Bhai to please share his words of wisdom as a man. Tarun, invite him. Sure. Thank you so much, Chairman Kishangarh Branch, the young and dynamic Chairman, Mr. Mohit Jain ji. Thank you so much. And namaskar, good evening to all the participants joining here in the national conference named as Avsar for all of us chartered accountant in this a good monsoon evening here in Rajasthan. I welcome you all on behalf of all the branches who has put their all the efforts in joining and in incorporating this national conference. So our moderator, I just want to apprise all of you that our moderator for today's session is CA Kirti Kumar Joshi sir. So just to provide a brief about people who may be joining not from the Central India region, because he is a very, very famous icon in the Central India region. Let me apprise you onto that. So CA Kirti Kumar Joshi ji, he belongs from the heart of incredible India, the state of Madhya Pradesh. He is a fellow chartered accountant and a regional council member of the Institute of Chartered Accountants of India from the Central region. So Kirti Joshi sir has worked earlier in his earlier days, he's worked in the banking sector, but the entrepreneurship skills from him has came out and then he has joined the practice and now, right now he is a partner in Harish Khandelwal and company based out of from Indore. So his area of expertise is majorly direct taxes and indirect taxes. He has just in the past year has served as a chairman of Indore branch of ICAI, as well as the treasurer and the vice chairman of the Indore branch in the year earlier.
So just on that, on the professional front, and coming some of to the academic sides of him also, as he is a very good narrator, orator, and author. So he was a member of editorial board of the newsletter published by the Indore branch of ICAI in 2014 and 15, as well as that he was on the editorial board of a newsletter published by the Tax Practitioner Association of Madhya Pradesh. The name of the newsletter was Tax Views and News. So he has served for 3 years over there from 2015 to 17. He has addressed more than 250 seminars on GST, and that too in across departments of income tax, GST, ICAI, at ICAI, ICSI, all the professional bodies. He is a member of BTC committee also for analyzing the paper on direct tax implication on new company law. He is a marathon runner for full 42 kilometers. He's an ultra distance cyclist, and the most phenomenal thing, he is recently selected as a 40 under 40 influential man for Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Sir, Kirti sir, I just don't want to conclude, but see, this is a very brief about him, and see, he is a very good chartered accountant, and you say from the author to the runner, it's all about yourself. So just wanted to hear some words of wisdom from you to guide us, all the young lads present over here. So over to you, Kirti sir. Thank you, Tarun bhai, and first of all, thank you very much for such a nice introduction. And respected Mohit Jain ji, chairman of Kishangarh branch, Ankit Somani ji, regional council member in absentia, Rohit Roaptia ji, central council member in absentia, and we have a very learned speaker, Jatin Harjai ji, in the next session, I think so. So जो टॉपिक है मेरे ख्याल से वो पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर, विच इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक. और जब हम बात करते हैं सेक्शन 67 की और वहीं से लेकर जो है सर्च, सीजर और इंस्पेक्शन जो स्टार्ट होता है, तो उद्गम स्थली जो है ना, जैसा आपने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की हृदय स्थली से आता हूँ, भारत की हृदय स्थली से, तो सर एक चीज़ और करेक्ट करता हूँ कि बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान. सो आई एम फ्रॉम नाथद्वारा कांकरोली. तो सर थोड़ा सा हक और ज्यादा हो गया हमारा. आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड सेक्शन 67 जो उद्गम स्थली है, जैसे मैंने कहा, तो वो बेसिकली बात करता है कि कब सर्च सीजर जो होगा वो कब इनिशिएट करेंगे. तो वो बेसिकली 5 तरह की बातें हैं वहां पर कि फर्स्ट हम बात करें कि सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने सप्रेस्ड किया है तो फिर आपके ऊपर जो है सेक्शन 67 की कार्रवाई की जा सकती है. सेकेंड, अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एक्सेसिव क्लेम अगर की है, सो इफ आईटीसी इज एक्सेसिवली क्लेम, तो सेक्शन 67 की कार्रवाई होगी. फिर अगर आपके पास जो स्टॉक इन हैंड है उसको आपने किसी तरीके से सप्रेस किया है, या तो इन्फ्लेट किया है या उसको किसी तरीके से आपने छुपाया है, सप्रेस किया है, तो भी आपके यहाँ पर सर्च की जो है इंस्पेक्शन की कार्रवाई की जा सकती है. उसके बाद आपने अगर अब जो क्लॉज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है और बहुत उसका हम क्राइटेरिया बोलेंगे तो बहुत वास्ट है, क्योंकि वो कहता है कि अगर आपने कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो हैं एक्ट के उसको कॉन्ट्राविक्ट किया है, तो फिर आपके यहाँ पर जो है वो सर्च की इंस्पेक्शन की जो है कार्रवाई की जा सकती है, विच इज वेरी वाइड टर्म. आप कोई भी रूल्स का या किसी भी लॉ का जो है उल्लंघन करते हैं तो आपके यहाँ पर हो सकता है. और या फिर आपने कोई गुड्स आपके यहाँ पर ऐसा रखा हुआ है जिसके ऊपर जीएसटी आपने पे नहीं किया है, आपने कोई ऐसा गुड्स आपके यहाँ पर स्टोर किया है, कुछ ऐसी इनपुट्स आपके यहाँ पर है जिस पर आपने जीएसटी पे नहीं किया है, तो फिर आप अगर इस तरीके का कोई भी इवेजन किया है तो सर्च सर्वे की ये सब कार्रवाई की जा सकती है. इसके बाद अगर हम बात करें तो जीएसटी में भी रिसेंटली हमारे यहाँ तो स्टेट ने भी ऑडिट स्टार्ट कर दी, मेरे ख्याल से राजस्थान में भी स्टेट ने ऑडिट स्टार्ट कर दिए होंगे. सो हाउ द मतलब जब जतिन सर ज्वाइन करेंगे तो एक चीज और समझना है कि क्या ऑडिटर मतलब डिपार्टमेंटल ऑडिटर कैन डू इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ थिंग. लेट्स से मेरे यहाँ पर अगर जीएसटी का ऑडिट स्टार्ट हुआ है और वो मुझसे कहते हैं कि किसी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन लाकर आप मुझे प्रोवाइड कीजिए, तो क्या डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के पास ये राइट है कि वो इस तरीके की इंफॉर्मेशन मुझसे मांग सकते हैं, पहली चीज. और दूसरी चीज, मान लीजिए मैं उन्हें डिनाई करता हूँ कि साहब मेरा ऑडिट हो रहा है और मैं लाकर नहीं दे पा रहा हूँ, या सामने वाला व्यक्ति मुझे आपने जो कंफर्मेशन मांगी है वो मुझे नहीं दे रहा है,
तो क्या डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंटल ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो उनके यहाँ पर सर्च या फिर इस तरीके की कोई भी प्रोसीजर जो है समन इशू करके और इंस्पेक्शन कर सकता है, या उनसे वो इंफॉर्मेशन कॉल फॉर कर सकता है क्या? सो दैट इज अनदर पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी ऑडिट का स्कोप जो है वो सर्च सीजर से बहुत कम है। और अगर डिपार्टमेंट का वैसे भी अब 1 जुलाई के बाद से जब स्टेट्स को कंपनसेशन मिलना बंद हो जाएगा, तो उनके लिए इस तरीके की इनकम के सोर्सेज जो होंगे वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इंस्पेक्शन और सर्च ही रहेगा, जिसके ऊपर वो रिलाय करके और आगे बढ़ेंगे और उसको आगे लेकर चलेंगे। सो विद दिस वर्ड, अगर मान लीजिए, मेरे पास कितना टाइम है तरुण भाई? Sir, you just continue. Sir, sir. yeah, so we are there till Jatin sir is also joining in, so he's just joining in some time. Okay, so can we throw some light on audit and audit procedure? 100% sir, 100% perfectly. So जब हम अगर ऑडिट्स की बात कर रहे हैं, जीएसटी ऑडिट का जैसे मैंने स्टार्ट किया था, और जीएसटी ऑडिट की बात करते हैं, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा रहा कि डेफिनेशन दिया ऑडिट का, जो आज तक कभी इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में जो है वो ऑडिट का डेफिनेशन दिया। और जब हम ऑडिट की डेफिनेशन देखते हैं तो उन्होंने उसके स्कोप को भी बहुत वाइड रखा कि एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स करके उसको स्टार्ट किया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मेंटेन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट नहीं हो सकता, ये तो वहां पर जाकर क्लियर हो गया था। लेकिन सर्च सीजर के अंदर, इंस्पेक्शन के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वहां पर जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन का, क्योंकि वहां एनी पर्सन वर्ड यूज किया है, और यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन का जो है किसी भी तरीके से अगर होता है तो ऑडिट किया जा सकता है। अब ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या है? तो सेम ऑब्जेक्ट है, टू वेरीफाई द टर्नओवर, टैक्स पेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम और रिफंड क्लेम और एनी कंप्लायंसेस जो हैं वो किए हैं या नहीं किए हैं लॉ के अंदर, उन सबको देखने के लिए और इंश्योर करने के लिए है जीएसटी ऑडिट स्टार्ट किया जा सकता है। अभी जीएसटी ऑडिट में कहा रिटर्न, तो रिटर्न का मतलब क्या है? तो रिटर्न की डेफिनेशन जो 2 सबसेक्शन 97 में दी है, उसी डेफिनेशन को इन्होंने आगे लिया और कहा कि रिटर्न वही होगा जो सेम 297 में, तो सेक्शन 39 का रिटर्न हो, सेक्शन 44 का रिटर्न हो या सेक्शन 45 का रिटर्न हो, मतलब एनुअल रिटर्न हो, फाइनल रिटर्न हो या 3B हो, जीएसटीआर 1 हो, सारे रिटर्न्स जो है इसके अंदर आ जाते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भी जीएसटी एक्ट में 2 सबसेक्शन 41 के अंदर दी है। और 241 को जब हम देख के आगे बढ़ते हैं तो वहां पर है किसी भी प्रकार का रिटर्न और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ जो है वो डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में आता है। सो जब सर्च सीजर के लिए हमारे पास आते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स, वेदर इट्स रिटर्न और इट्स इन प्रिंटेड फॉर्म और सॉफ्ट कॉपी, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में आता है। और वहां पर अगर कुछ भी मिलता है तो हमारे लिए तकलीफ वाला मामला हो सकता है। तो अगर स्कोप वाइज बात करें कि स्कोप कैसा है, वाइडेंड है या स्कोप कम है, तो अगर हम ऑडिट से पर से यहाँ पर स्कोप की बात करें तो सर्च सीजर का नो डाउट स्कोप बहुत वाइडेंड है एज कम्पेयर टू ऑडिटिंग जीएसटी ऑडिट। अभी ऑथराइज्ड ऑफिसर की बात करते हैं कि हु इज द ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो जीएसटी में जब हम ऑथराइज्ड ऑफिसर की बात करते हैं कि ऑडिट करते समय ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होगा, तो एट एसजीएसटी द असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इज द ऑथराइज्ड ऑफिसर। और जब हम बात करते हैं सीजीएसटी में, सुप्रिंटेंडेंट इज द ऑथराइज्ड ऑफिसर। लेकिन सर्च सर्वे के लिए जो है वो आपको कमिश्नर से या ज्वाइंट कमिश्नर लेवल से जो है वो लेकर आना पड़ता है वहां पर अप्रूवल। सो दोनों में एक डिफरेंस है, यहाँ पर ऑथराइज्ड ऑफिसर्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए गए हैं। अब ऑडिट का जनरली क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से ऑडिट स्टार्ट किए जाते हैं, हम ये सब बात करें। लेकिन उसके पहले क्या हमें केस स्टडी, देखिए प्रोविजंस तो हम सबको पता है कि भाई ऑडिट आना है, 15 दिन पहले नोटिस देना है, नोटिस दिया है, 3 महीने के अंदर ऑडिट कंप्लीट करना है। ऑडिट का टाइम पीरियड कितना बढ़ा सकते हैं, तो क्या 6 महीने और एक्सटेंड किया जा सकता है, रीजन इन रिकॉर्ड हो, राइटिंग हो, तो फिर उसे बढ़ाया जा सकता है। Sir, Kirti sir, just Abhi, in this topic also, it will be better for all the participants if you can cover those points also when the department has initiated audit by giving a notice of ADT1. So, what are the key points which every SSE or consultant should adhere about what they have filed in GSTR 9? How much of that is of importance? If there were some mistakes on 9 and due to it was not being able to revise, what are the
remedies available to them at the time of audit? इसके लिए केस स्टडी करते हैं. मेरे ख्याल से केस स्टडी वुड बी द बेटर इन दैट केस. सपोज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और उसे सेक्शन 65 का एक नोटिस मिलता है और उसमें ये कहा जाता है कि 7 डेज में आपको डॉक्यूमेंट्स देना है. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है? तो बैलेंस शीट देना है, ट्रायल बैलेंस देना है, 26 एज देना है, एनेक्सर 1. एक अगर सीजीएसटी का ऑडिट होता है तो हम देखते हैं बहुत बड़ा सा एनेक्सर हमारे पास में आता है और उसमें दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जाती है. तो एनेक्सर 1 हमें फिल करके देना है और साथ में ये लाइन तो वो लिख कर देते ही है कि अगर आपने इन सब का जवाब नहीं दिया तो हम ये मान लेंगे कि इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है. सच इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल एंड ड्यू प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द यू. इस तरीके से मेरे पास नोटिस आया. अब जब जैसे ही नोटिस आता है तो असेसी के दिमाग में 3-4 क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि यार मेरा ऑलरेडी मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट कर दिया था, जीएसटीआर 99 मेरा फाइल कर दिया था, तो फिर क्यों मेरा वापस ऑडिट हो रहा है? सेकंड क्वेश्चन आता है कि यार क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर मैंने टाइमली रिपोर्ट नहीं किया, टाइमली सबमिशन नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, भाई इसने 7 डेज में मांगा है मैं एक कंडोनेशन भी नहीं मांगू, मैं फर्दर टाइम भी नहीं मांगू, तो क्या हो जाएगा? थर्ड चीज जो दिमाग में आती है कि एनेक्सर 1 तो फिल करने की लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर्स की है, मैं क्यों फिल करके दूं? क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल करके देना और मैं ना दे तो क्या हो जाएगा साहब? इतनी सारी इंफॉर्मेशन मुझसे तो संभव 7 दिन के अंदर. और जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो क्या प्रोसीजर ऑप्ट करेगा ऑडिट करने के लिए? तो जनरली ये 4 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं. सबसे पहला कि भाई सीए ने ऑडिट कर दिया है, उसके बाद भी क्या मेरा जीएसटी ऑडिट होगा? तो यस, जीएसटी ऑडिट इज अ सेपरेट प्रोसेस अंडर सेक्शन 5, तो वो कर सकते हैं. अब बात आती है कि भाई उन्होंने कर दिया और मैंने टाइमली जवाब नहीं दिया, तो क्या डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? सबसे पहले साहब सेक्शन 64 को जब हम देखते हैं तो समरी असेसमेंट आता है और समरी असेसमेंट के अंदर ये बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू. अगर डिपार्टमेंटल ऑफिसर को ऐसा लगता है, उसके पास ऐसे ग्राउंड्स हैं, उसके पास बिलीव है कि अगर मैंने ये समरी असेसमेंट नहीं किया तो रेवेन्यू जो है एडवर्सली इफेक्ट होगा, तो वो सेक्शन 64 के अंदर जो है वो समरी असेसमेंट कर सकता है. दूसरा हम ये देखते हैं कि समन्स तो वो दे ही देते हैं. हम जैसे ही एक बार नॉन कंप्लायंस करते हैं वो डायरेक्टली हमको सेक्शन 70 के अंदर जो है समन इश्यू कर देते हैं और जैसे ही समन आता है तो आदमी के हाथ पैर फूल जाते हैं कि भैया डिपार्टमेंट से समन आ गया और वो कह देते हैं कि आपको इन पर्सन आना है. मतलब उसमें तो हम आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी नहीं लेंगे. थर्ड, सेक्शन 74 में वो शो कॉज नोटिस इश्यू कर सकता है असेसिंग ऑफिसर. और सेक्शन 74 कहाँ है? तो जहां पर विलफुल मिस स्टेटमेंट हो, सप्रेशन ऑफ फैक्ट हो या फिर फ्रॉड हो, तो वहां पर सेक्शन 74 तो वो ये मान सकते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप उस इंफॉर्मेशन को सप्रेस करके बैठे हो, आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे हो. दैट्स व्हाई दे कैन इनिशिएट द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 74. फिर बात आती है कि वो ये भी कह सकते हैं कि साहब सेक्शन 35 में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास होना चाहिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन नहीं किए, तो हम उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ में प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं. एट द लास्ट सेक्शन 122 जो पेनल्टी की बात करता है, जतिन सर ज्वाइन कर लिए हैं. सो सेक्शन 122, आई वेलकम यू जतिन सर ऑन बिहाफ ऑफ किशनगढ़ ब्रांच of CIRC of ICAI. Welcome you sir, and over to Tarun bhai. Thank you so much, Kirti sir, to provide some enlightenments to all the participants over here about the GST audit which department is right now doing up. And so we have our speaker of the day of yours, Jatin sir has joined us. So first of all, thank you so much, sir. You are traveling, you have just rushed out from the airport to hotel and you have given time to deliberate on this topic with us today. Thank you so much from the bottom of the heart. And I welcome you on behalf of all the branches convening this national conference of 2022. So thank you so much, sir. And to just handing over the session to the most dynamic speaker of India right now on indirect taxes, I just want to apprise everyone about the in brief, just about the profile of Jatin sir. So the stature of Jatin sir is like that. He's actually no introduction is required, but just to again provide a bit of information about him. So Jatin sir is right now a practicing advocate. He has practiced as a chartered accountant for more than 15 years before starting this legal practice. So he's also a guest faculty on various
educational, professional, and industrial platform, majorly on indirect taxes. And he has authorized many articles also in direct taxes, which has published in the journals of ICAI or UAE VAT also. Sir is very active in representing industry also in front of department at various levels. Actually, he has represented to the tax advisory committee before the Honorable Chief Minister of Rajasthan for giving recommendations and suggestions before the state budget. He is also very active in representing for all the bodies of ICAI, Rajasthan Tax Consultants Association, Tax Consultants Association, Jaipur, before the commercial taxes departments here in Rajasthan. So, sir is an accredited trainer of NACON also, the National Academy of Customs and Indirect Taxes. So, the sir is not only grooming all the professionals and the young lad, he is grooming the all the officers also, which are you and we maybe daily interact within the department. So, apart from being a panel GST trainer of ICAI, Jatin sir was part of a faculty identification and trained the trainer programs of Indian GST as well as UAE VAT. So Jatin sir is a keen learner and having a deep interest in all academic activities. Just to apprise a few, he is a co-opted member of National Indirect Tax Committee of Federation of the Industry 2021-22. He is a special invitee member of the National Indirect Tax Committee of ICAI. He is a co-opted member of Indirect Tax Committee of PhD Chamber of Commerce conclusively from 2018-19, 19-20, 21-22. He is a member of panel of GST expert maintained by CIRC of ICAI. He is member of AIFTP, the Chamber of Tax Consultants Mumbai, RTCA, BCAS Mumbai, Tax Consultants Association, and much more. Sir, although the words are few to describe you, but everyone here is just waiting to hear from you on today's topic, which is much relevant in right now in the present scenario about the inspection and such. So over to you, Jatin sir, on this a good nice monsoon evening here in Rajasthan. Over to you, sir. Sir, I think you are in mute. Yes, sir. Thank you, Taranji, for the nice introduction. First of all, please let me know whether my voice is audible or not. Sir, perfectly audible. Thank you very much. So I switched my internet, so I couldn't hear you completely. But thank you, Kishangarh branch. Thank you, PDC committee, for giving me this opportunity so that I can share some of my words with my colleagues, friends, and seniors. Indeed, it's a pleasure to be here on this platform, particularly Kishangarh, which is very near to our heart. Kishangarh is a place which has हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया हुआ है कई जगह के ऊपर. So with this, and my sincere apology for being late by 5 to 10 minutes, since it was beyond my control, so I cannot help in it. Anyways, directly coming to my topic. We all know that nowadays what happened, each and every place we are hearing that this GST authorities had made inspection, GST authorities had made search, and maybe not even search or seizure. At times summons are being given, at times some unauthorized entries are there from the authorized officers, but somehow we are hearing one way or another that there is some intrusion by the authorities. I have specifically chosen this particular word while I'm sharing my presentation with you. They are intrusion. I believe this is an intrusion. Why I'm saying so? Let me recapture some of the basic aspects which we all know. But at times when we are into regular practice, we forgot those aspects which we read at the very, very initial level of our learning. First, see, basis of any taxation comes from Article 265 of the Constitution of India. This is what the basis. And most important word is, the wordings in the Article 265 is, no person shall be levied or, no tax shall be levied or collected otherwise than by way of authority. Please mind, it is not levy, it is collection as well. And as far as my today's topic is concerned, I'm using this particular word, collection. So for our session, 265 reads like this: no tax shall be collected
otherwise than by way of authority of law. Everything has to be as per the legal procedure. Some more aspects before I enter into the technical issues and questions of the questions or FAQs in relation to search and seizure are concerned. Some more aspects in relation to Constitution which we need to know, that our Constitution provides some of the fundamental rights to its citizens. Under Article 19, it provides 19(1)(a) that there will be a free right of free speech and expression. 19(1)(d) provide that you can move freely throughout the territory of the India. Most importantly, 19(1)(g), which is directly in concern with us, provides that any person shall be, any citizen, not the person, sorry, let me rectify myself, citizen will be having a fundamental right of practicing any profession or carry out any occupation or trade. He can, and all the citizens are free. This is what the fundamental right. Next important, Article 21. It says, no person shall be deprived of his life and liberty, personal liberty. And mind the important word, it says, except according to the procedure established by the law. I am reminding you a couple of articles of the Constitution, which is going to form the basis of our discussion. More importantly, for all the person, all my young brothers who wanted to practice in this particular specialized, because handling search is altogether a different kitty, different from how we deal maybe audit or the regular assessments. One last reference to the Constitution as of now to start with. Article 300A. It says that no person shall be deprived with of his properties otherwise than by way of authority of law. That means there has to be a legal authority. Then and then only law has to say that in this manner a person can be deprived with of his property. Just like I said about the personal liberty. And please mind, there are so many legal pronouncements from the Supreme Court side which says personal liberty includes privacy, life of life, privacy of the life, to live with dignity, not like a cattle. This is important. We all should know this aspect. Now, going further, when we all know these aspects, please mind, whenever you are trying or attempting to handle a search proceeding, if you are trying to handle it only and only through GST law, that means CGST, SGST Act, CGST, SGST rules, please mind, it will not serve the complete purpose. Wherever relevant provisions of the CPC, Code of Civil Procedures, then CRPC, Criminal Procedure Code, IPC, Indian Penal Code, and Evidence Law, Evidence Act. So I believe, and I suggest all my friends who are just newly qualified, I suggest them to please, apart from the GST law, what the provisions of the GST law are there, apart from this, please try to have some grip on these 4 general laws as well, which are very, very much relevant when you try to handle or when you are going to handle search cases. These are the very, very important aspect. Hello, Jatin sir. I think there is some issue in connection with Jatin sir. Hello. Sound is coming. Yeah. There was voice break. Yes, sir, you are visible. Jatin sir. Yeah, I can hear you very well. Yeah, now it's audible, sir. You can please proceed. Fine, thank you. See, since we are having around 1 hour 15 minutes in our hand, so I will try to be discussing only and only material aspects and maybe some of the issues which are being faced by the professionals and the business community while handling the search, which are mostly known, which are basically come across while handling the search cases.
Otherwise, if we start on each and every aspect of the search, it may take whole day. Maybe a whole day seminar can be dedicated on handling this particular aspect. So precisely speaking, while I start dealing with this particular scenario, immediately some of the cases which I was dealing on a regular basis comes to my mind. We have witnessed that the searches has been conducted by the department for the reasons like there is a mismatch between 2A and 3B, like input tax credit has been claimed by maybe multiple times than what is there in the 2A. Maybe excess claim of the transitional credit. Maybe department 18% instead of 12%. Not recent, last year, film producers were searched on this particular ground only. That hello, Jitin sir. I think it's been some technical problem here again. Sir, are we audible to you? Yeah, it's better now, sir. Sir, continue by turning off your video, sir. Yeah, that will be, I think, better. Okay. Right. Is it fine now? Yes, sir. Okay. It's audible. Thank you. So see, so many of the cases I have just given an example that the searches has been made by the department for the reasons that there is a difference between 3B and 2A. Maybe transitional credit is not correctly claimed. Maybe difference of tax rate, like film distributors were rated last year for the reasons that the tax rate charged by them is 12% instead of 18%, which is the view of the department. I don't know what is the final call on that because there is no ruling from any of the courts till now. Then we have seen that so many flour mills were being raided, but the reason was the department was assuming that these are the taxpayer was of the opinion that it is exempted one. So these were all the reasons on the basis of which the searches has been conducted so many times. Now, can search be conducted for all these reasons? Can search be conducted for all these reasons? In my humble opinion, answer is absolutely no. Why? Let us come back to the point from where we started. That freedom, personal liberty, this is a fundamental rights provided by the law, provided by the Constitution of India. Any compromise into it can be done through the and now what is law? Law specifically says as far as search are concerned, please mind that's very, very important. So I must request you, sir, please go on your video, whether it's breaking and not, but the session requires you. You don't mind, sir. Actually, network issue is there due to some weather conditions. I must suggest all the participants to please collaborate with us, cooperate with us. Should I try to, yes, Mohit, should I try to switch internet? Yes, sir. Once. Yes, sir. Maybe you can try once. Maybe just a minute. Yeah. I have switched now from Wi-Fi to hotel Wi-Fi to mobile. I don't know how much it is working now. Sir, you are fully audible as of now. Maybe you can try by starting your video. We will manage it at any cost. But we want to see you also. Yes, sir. We want to see you. If it is audible, should I proceed? Yes, sir. Audible as of 100% audible. Okay, fine. And sir, it will be a break. We will just pause you. Yeah.
Okay, fine. So see, let's refer to the statutory scheme of the search, which is provided under the GST law. Number one, let's start from first clause, section 67, subsection 1, which talks about inspection. It says inspection can be done, number one, the incidences of inspection, when it can happen. First of all, the proper officer, please mind the word the, I will come to it at a later stage. The proper officer who is not below the rank of the Joint Commissioner. So first of all, there has to be a person who is going to authorize the search warrant. And he should not be below the rank of the Joint Commissioner. And the prefix used is the. It is not any. It is the proper officer. Number two, that proper officer has reason to believe. Has reason to believe. Reason to believe what? Reason to believe and reason to suspect, we all understand. So as of now, I'm not entering into wherever required. I'll just touch upon that particular thing. Thank you. So that proper officer has reason to believe that a taxable person has suppressed. Please mind this word suppress. I'll come to it again. This is very, very important wordings. I'm just discussion on legal in relation to inspection. So, taxable person has suppressed one, a transaction in relation to supply of goods or services. Number two, has claimed input tax credit. Goods. Sir, it's breaking in between right now. Jatin sir, it's actually right now it's breaking in between. It's breaking? But it's breaking right now also, sir. Yes, it's fine now, sir. Issues. So will definitely join us. And then I request all the members or participants, if you are having any query to ask something, you can just post it into Q&A sessions. Yes, and we can collect all the Q&As at the end of the session so that we can get it answered through Jatin sir. So maybe whenever you get time within the session, you can just put it into the Q&A section. So we'll just collect all the Q&As and we'll try to get it answered today itself by Jatin sir. Yes, sir. So join again. Yeah. Yes, sir, we are able to view you now. So you are on mute. Sir, you are on mute. Okay. I've joined with one of my friend's phone, which is having a different network. I don't know it's better or worse now. So much better So now. Also, yeah. Is it audible? Not that much. Is it audible? Yes, sir. Yes. Right. Okay, fine. Sir, I was just discussing inspection provision, which are contained in section 67, subsection 1. Some of the points which I have highlighted is that it says the proper officer, not below the rank of the Joint Commissioner. It is not any proper officer. It is the proper officer. Second, that proper officer should have reason to believe. Reason to believe for what? That number one, that there is a suppression of any transaction in relation to supply of goods or services. Number two, supply stock of goods in hand. Number three, there is a claim of in excess of the actual entitlement. This is what a
three pointers. Then there is a fourth reason I'm not touching as of due to paucity of time, that residuary clause. So if any of these things are there, in that case, inspection can be authorized. Please, inspection can be authorized, not search. Inspection can be authorized. And let me touch upon some of the highlighted point which I have said. What is the meaning of the term the? Please mind and refer recent judgment of the Honorable Supreme Court in the case of Canon India. Para number 10 and para number 11 deals with this particular phrase the. They say there are two type of article only. One is the, another is A or M. And the has to be very specific one. Can there be any more than one officer for it, authorized officer? My answer is absolutely no. Whereby now what we are seeing is for a particular assessee, a search authorization has been made by the center as well and the state as well. Similarly, different kind of wings within the state and centers are also going to assign. Please mind, in my humble opinion, that is absolutely wrong. That is not the spirit of the law. Had this was intended by the law, the lawmakers could have used the word that we are any proper officer. They have specifically chosen the word mentioning the proper officer. So the lawmaker has to identify that this is going to the proper officer, not other one. Second point which I highlighted in this particular section, section 67 subsection 1, if you can recollect, it uses the word taxable person has suppressed. Suppress what? Transaction of supply or stock of goods. He has suppressed. What is the meaning of suppression? Very important change in GST law from the earlier law here. What is suppression? Please mind, suppression is not the word which we are seeing first time. Under the erstwhile law, pre-GST era also, this suppression word was used in the section 73 as well. And if you refer to some of the landmark judgment, like Champagar Drugs, Continental Foundation, these are the judgments from the Supreme Court which express what is suppression. And clearly they have held that when something, some kind of things are there, that first of all, there has to be a positive act. Positive act towards a kind of evasion that you are going to hide from yourself. Number two, just because something is not reported into the return, having a bona fide exemption cannot be said to be a suppression. This is very important. These are the landmark Supreme Court judgments. Third, when a fact is known to both the parties, it cannot be said to be a suppression. For example, I am taking a particular count on a particular type of transaction, that I am dealing in flour and flour is exempted. This is what I stand I have taken since long, since 4 years, 5 years. Now GST, it's almost 5 years, the GST is about to complete. So I am taking a stand from the day one that my product is exempted. The department knows that I am dealing this particular product. How can the department on all of you can say that you is known to both the parties? Those particular products are mentioned in my RC application. And I am filing my return as exempted, treating it exempted from the day one. That means this fact is known to both the parties. So no one can say that it is a suppression. Please mind, this is what I am referring to the pre-GST era judgments. Most of the time I rely on those judgments, and I believe that these judgments will have a very bring attention of my friends here that there is a change in legal position under the GST law for this. Having this experience, having this experience of so many judgments, the lawmakers has specifically defined the term suppression. The term suppression has been specifically defined for whole of the act. And they have specifically included that if you are going to if you are not going to declare something which is required to be declared in the return, and you have not declared, that will also be treated as a suppression. Meaning thereby, let me give you an example. Let us assume you are having an exempted supply. And you think, okay, nil, because not mentioned the Hello, sir.
The bandwidth is low as of now. So we need to take a call. Maybe, sir, at least, maybe, sir, if you can try it, then logging off from video. Maybe if you can just open only audio. Sir, take your time. Take your time, sir. Let it be. Yeah. Yes. No, sir, it's still being on a bandwidth low space right now. Okay, so right from the maybe so So people are asking. It's been Internet is not as far as the energy level. So we will wait. Please take time. Sir, take your time, sir. We are just waiting over here. So let me give me 5 minutes. Let me talk to the hotel guys if they have some alternate things. I'll come back in 4 to 5 minutes time. That if they have some alternate over. Sure, sure, sir. Till then, I ask Charan Modi to please just share some bit kind of knowledge about your bitcoins and cryptocurrency. Mohit, I think I have already told the hotel guys, they are just checking for an alternate. Within 5 minutes they'll revert back to me. By that time, what we can do is you can ask the participant to pose their questions at least, so that if any specific questions are there, we can handle with them those. Sir, actually we have asked in between, and some of the participants has already posted it over there. Maybe and so one question is that the judgments which you have right now mentioned about the Supreme Court judgments for the suppression, if you can just provide the names again. Continental Foundation joint venture is one of the leading judgment. It is a 2007 judgment, 216 ELT. And the other is Champagar Drug Limited is another Supreme Court judgment which deals with all those aspects. Okay. Champagar Drug, fine. And sir, that's correct. Another one is, as you have mentioned, as per the subsection 1 of section 67, that inspection can be initiated if a joint commissioner or the proper officer authorized by joint commissioner has a reason to believe for majorly 3 things: that there is a separation of the supply of goods and services, or in stock of goods, or he has claimed input tax credit in excess of his entitlement. So a question has been asked that all 3 can be handled by assessment procedures also. So what is the basic difference when the department is going for a search or inspection into such cases? I think that's a very beautiful question, or I must say that this is what the foundation of understanding of all these proceedings. See, everyone has to divide the proceedings in 3 parts. First of all, we need to understand it. One is inquiry. It is a kind of flow. First inquiry is being done, then there is the adjudication, or you can say assessment, and thereafter it comes the recovery part. Let me repeat. ये sequence कभी break नहीं हो सकता. First there has to be an inquiry, then adjudication or assessment, and then recovery. What happens nowadays? Recovery comes first. That is what the challenge. I just wanted to highlight, and why I pitched all the constitutional provision at the inception of my session. These all will be useful for us. Anyways, we need to understand this basic concept, that first inquiry, then adjudication, then recovery. Fine. Okay. Now let's understand what kind of inquiries can be there under the GST law. It can be a scrutiny. You are going to receive a ASMT 10 notice. Please mind, ASMT 10 notice is not initiation of the scrutiny. Rather, scrutiny has already been done. Then when there is a discrepancy in the scrutiny, this scrutiny is altogether different from what is there in the income tax law.
Income tax law, the scrutiny is initiated, then you get a notice that your case has been taken up into the scrutiny. Now you furnish these documents. GST law doesn't permit this. GST law says scrutiny of the document, the taxpayer has already been filed. So the case has been selected for the scrutiny, you won't receive anything. This is what the law of the land. Case has been selected, departmental officer is supposed to analyze all of the documents you have already. Maybe different kind of returns, maybe GSTR1, maybe GSTR3, maybe some of your whatever data is. Then there is any discrepancy, office supposed to the ASMT mentioning the discrepancy. This is what the correct way to handle discrepancy. So this is one of the way of inquiring into the affairs of the businessman from the GST perspective, scrutiny. Number 2, departmental audit. Number 3, if there is any complexity in departmental audit, then they can refer for a special audit by a chartered accountant or a CMA. Number 4, inspection. Number 8, search. Number 6, summons. So these are the ways by which why can we I think Jatin sir has dropped and maybe reconnecting it again. Yes, sir. We can see you now. Until where you have heard, I had just given the examples that what kind of inquiries can be there under the GST law. 6 type of inquiries I told, and I had said that please mind, I have kept all these type of inquiries on a same pedestal. If it is a scrutiny, if it is an audit by the department, professional, someone, if it is an inspection, if it is a search, all these are same. They are at same pedestal as far as the adjudication process is concerned. No person can assess, no person can demand any money to be deposited at this level. This is merely an inquiry. The powers in the different kind of inquiries are the different one. Powers are exercised differently, but no one is having a power to assess them at the inquiry level. No one has the power to ask for deposition of the amount at the inquiry level. For example, if it is a scrutiny, scrutiny is the softest form of inquiry, that they are giving a letter to you that you please come to our office, or maybe your representative can come to our office and present these documents. Sophisticated form. If it is an inspection, it is a bit hard one. Or rather, if it is an audit, I would say. Second step is an audit by the department. They will come to your premises, but with a predefined date and time that we will come to your premises to check this year's data. No businessman wants the off-tax officer to come to. They will predefined time. That is harsher than the scrutiny. Third is inspection. This is one step more hard than the audit, because they will come to the premises but without intimation. This is what is inspection. Now search and seizure. That's the hardest form we can say. They'll come to you without intimating and are having grave powers as well. They can break open the lock. They can seize. Rather, they are supposed to seize, I would say. I think Mohitji will recollect when he was discussing the topic. He, I think, sent me a flyer and mentioning that search, inspection, and seizure, something like this. I just corrected the phrase. I've said, no, it cannot be written like this. It has to be inspection, comma, search and seizure. Please mind my word. Search and seizure. This is very, very important to know that inspection is one proceeding and search and seizure are another set of proceedings. Why I am saying so? This is very important to understand. One, in inspection proceeding, seizure cannot be there. Power of seizure is not there in the inspection. It is there only and only in the case of search. This is what one difference. Second difference, I'll let you know while I'll complete my section 67 subsection 2. So 67 subsection 1 I have dealt with.
that if there is a suppression, if the proper officer has reason to believe that there is a suppression on account of stock, suppression on account of transaction or claim of input tax credit, then inspection can be authorized. Come to the very, very important aspect, section 67, subsection 2, search. Because see, what I have seen is most of the search has been done with the wrong reason under the GST law. And search is a proceeding by which my fundamental rights are being breached. So it is very important to see whether they are as per law or not. Please mind and refer section 67, subsection 2 of the GST law, which specifically says, if the proper officer, again the terminology is the proper officer. I'm not going to repeat that because I have already dealt with the meaning of this word, why this word the is there. So this is very important to understand. The proper officer, again not below the rank of the joint commissioner, that is fine, has reason to believe that any goods liable for confiscation, books, documents or things. क्या चीजें हैं? There are 4 things, 4 items only. That the proper officer has reason to believe that goods liable for confiscation, books, documents and things, these 4 items only, is in his opinion, which are relevant for the adjudication or the assessment or the determination of the tax liability of the taxpayer, are secreted. Secreted. This is again a very, very important phrase. In 67(1) we have seen the phrase used. GST section 7 subsection 2, which authorizes search, has never referred to search. It has referred to only in secrecy of what? Goods, things, documents and books. That's it. 4 things. If they are secreted, then Sir, a voice is breaking in between right now. You have to repeat it. Please mind the term search and seize. Just a moment. So there is no option. It's fine. Is it fine? So tampering in between right now. So not yet proper. Actually, sir, we are sorry. We had given you the perfect time. To all the participants, the session of sir was 4 to 6, but due to some reschedulement of the speakers, sir had to adjust in between. And with a polite manner, sir agreed with all of our conditions that sir will take in evening session. Sorry? Yes, sir. We are able to see you and hear you right now. Yes, sir. You are right now correct. What do you want? Should I stop or I continue? No, sir. Obviously, you have to continue. Sir, you should continue, sir. See, if there is again and again this kind of disturbance is there, it is not useful. Honestly speaking, it is not useful for parties. Also not enjoy. So maybe you can try by switching off the video. Maybe, sir. At least we can hear that. Done that. You guys have told me to turn on the. No, sir. That's out of our. वो सर हमारा ही स्वार्थ था उसमें. That's out of our shared thing. But maybe we just want to go with the flow. We want to hear you. So maybe if you can switch off the video and try, sir. I think. So sir is joining back right now in a few minutes. Yeah, they've joined back. Sir is trying his level best. Yes, sir, continue, sir.
without video. Yes, sir. Should I continue? Yes, sir. Okay, fine. Okay, fine. I was just giving you an option that you can consider at maybe back of the mind, you can discuss, and if you think fit, we can go ahead with it. By the time I'm going to start, you can stop me if you think that that proposal is fine. Because see this search is a very, very important aspect, technical topic, and one must has to be in correct rhythm for that as well. Anyways, okay, let me start from where I left. I was discussing 67.2 with you. That law says the proper officer has to have a reason to believe about the secrecy of goods liable for confiscation, number one, number two, documents, number two, things, number three, books. That's it. If they are secreted, then the mandate is that proper officer will authorize that go search and seize them. Please mind, that's it. This is what the mandate of section 67.2, nothing less, nothing more. Nothing less, nothing more. I must say there is no option with the authority that he is not going to seize those things. Now, having said this, let us refer to the term, what is reason to believe? Though I understand that everyone knows about it, but just want to highlight because that is very, very important. Reason to believe is a term which has been defined in Indian Penal Code. It has not been defined in the GST law. And in IPC being general law, it is being referred there, from there. And all the taxation laws borrow this frame, this word from IPC only, section 26, which says, reason to believe is a thing, is said to have a thing, if he has sufficient cause to believe that thing, but not otherwise. That means, if I phrase it in Hindi, ये कोई शक की बात नहीं है. It is not about suspicion. It is not about shak. It is vishwas, or it is a yakin, we can say. Believe that this document is secreted there. I don't have any other thought about it, that this document is not secreted there. Maybe there is a gray area sale. Maybe clandestine removal of goods are there. And details of the same are available there at that particular place. I don't have second thought about it. This is what reason to believe. So 67.2 specifically mandate is the officer has reason to believe that something is secreted. Something is something, some goods or some books or documents are secreted at that place. The officer is supposed to go, search it and seize it. That's it. Now what happened, you will see so many times that whenever search is being there, a panchnama is being made. When the panchnama is being given to the client or the person who has been searched, if something is seized, then INS 02 is being given. If nothing is seized, they write it in the panchnama that nothing has been seized. No incriminating document has been received, and accordingly there is no seizure. Let us divide these cases. So many times it has been seen that nothing is. So let me identify the meaning of this term secret. Law uses a thing that reason to believe the respective officer is there that something, books, documents or goods are secreted. What is the meaning of secret? From the meaning of the word secret is hidden. Secret is when you are putting up something, some books or documents at a place with the intention that the other person cannot see him, cannot watch him, cannot identify it. This is what the secreted. If some other person can identify, can search it in a normal prudence, then it is not secreted. Let us assume a case whereby a search is being made and you have got a search seizure memo whereby some bill books which are being kept at a regular sale bill almirah, some purchase bills which are kept at a regular almirah with a tag of purchase bills, and seizure of these bill books are being made, maybe purchase bill, maybe sale bill.
Can it be said to be secreted? Let us say some officer went to the search and they find that there is a multiple almiras are there. One of the almirah is sales book, one of the almirah is purchase book, one of the almirah is contracts, one of the almirah gate pass, etc., etc., etc. These kind of sections are already being made in the accounts department. And sale bill is kept at there in the sale book almirah. Purchase bills are kept at the purchase almirah, and department gets there and sees them. Can any prudent man say that this is a secreted? These bills are secreted? My answer is absolutely no. Now you see whatever search cases you have seen till now. First of all, there will be 50% cases whereby there is no seizure. You will see 50% of the cases whereby there is no seizure. That means from that point I start. If there is no seizure, I have a prima facie reason to say that the search authorization was wrong. Prima facie reason to say that search authorization is wrong, because the law mandated the procedure for authorization of the search, that there has to be a reason to believe that these things are secreted there. And when they have not find anything, that means the recording of reason to believe is not correct. Number two, now go to the cases whereby some seizure is there. Now what's going to happen when some seizures are there, second 50% cases. In those seizure cases, you will see so many times the documents, what kind of documents are there? Sales bills are seized, purchase bills are seized, etc., etc. As I have already discussed, can be said that these are the secreted things? Those informations are already being given through the returns and other documents to the department. Can it be said to be secreted? In my humble opinion, no. So in all those cases, I must say that the search action is not correctly authorized. And that's the basis where we need to understand what is the suppression, what is the secrecy. And search can be authorized only and only for the purposes to search and seize. Whenever there is a search, there has to be a seizure. Search and seize those secreted books, documents, records, things and goods. That's it. There is no other mandate. Now let us come to practically what happens. In all the search and seizure cases, what happens? Practically they go with the target. Practically department goes with the target that we need to get this much of the amount deposited from the assessee. That's it. There is no other theme behind it. This is what the specific reason. Now please, the question which poses is it permissible for the department that they force the taxpayer to deposit the amount at that point of time? Answer is specifically no. As I have already said, first there has to be inquiry, then this search is nothing but an inquiry stage. It is nothing more than a fact gathering or an information gathering exercise, not more than it. Department doesn't have any locus, doesn't have any right to ask the taxpayer to pay that amount. Whereas they do this aspect, this thing only. Now let us get it through the legal provisions, because we need to understand the law, because as I have referred, that search can be conducted with permission of the law only, otherwise not. Please mind the recovery which has been forced during the search actually. Please refer to the provisions of the law. Section 79 tells you the modes whereby how the recovery can be made from any taxpayer. Section 79. Which starts with the phrase where any amount is payable by a person. Amount payable. So can we say at the date of search, any amount is payable? Any amount is payable? Answer is no. Amount is payable when the adjudication order is passed, assessment order is passed. So precisely if you will refer section 73 and section 74, precisely procedure is when the inquiry gets completed. Please mind my word, inquiry gets completed, not before that. When inquiry gets completed, a show cause notice has to be issued. A show cause notice has to be issued to the taxpayer.
When the show cause notice is issued, department has to concrete his case. All the facts analysis has to be concretely told to the taxpayer. It is like a charge sheet being presented in the court. It's like that. So all the analysis, all the inquiry has to complete by that time. And as taxpayer was supposed to told all the allegations along with all the computation. After only assessment can be done. Please refer subsection 9 of section 73 or subsection 74, which specifically says that the proper officer, after will determine the amount of tax, interest, and penalty and pass on, which is passing of the order, the amount will become. Please find it. And as I is payable, an amount application order, the assessment order is being passed, not before this. And now what happens, please refer section 78, which specifically says recovery proceeding will have to be initiated, will be initiated only and only after 3 months. 3 months from the passing of the order. Meaning thereby, let us say, if on today, on 18 June, an order is being passed, in that case, recovery can be initiated only and only after 3 months. That is after 20th September, not before this. And what department is doing? On the day when they starts recovery. So that is why I'm saying this is absolutely and fundamentally wrong. Let me support this particular argument, and I think you guys should be well aware with the legal history of it. Before I come to the couple of judgments which are from the GST era from the couple of high courts, let me come to the landmark judgment of the pre-GST era. That is very important, and if one goes through with all these judgments, I must say that definitely they will be enriched with their thoughts, how the recovery should be done, how these assessment or the assert should be handled. Please refer the judgment of the Dabur India Limited. This is a classic case. Dabur India Limited from the Honorable Supreme Court. See what happened in this particular case. There was a recovery being, the assessment was being made, demand was being due on that particular assessee, Dabur India. And it was a case in relation to that excise duty on medicinal preparation. If you can recollect, there was a duty on this kind of duty was there. Then what happened, and a license was used to be issued by the department for that particular working. Just like you can assume if whosoever was dealing in the VAT era, that you need to take C form, F form, E form from the department. You need to obtain it. And if you can say that what department do at times, there is a demand department used to deny those forms. That we will not give you this C form, F form, E form. Maybe we will not give you the road permits as well. It used to happen in the earlier era. It used to happen in the earlier era. But similarly, in this case, what happened? Dabur India was denied to give the licenses. Now the Supreme Court came very heavily on this. The Supreme Court, in a very crystal clear and in very hard word, has specifically said that we would not like to hear from a citizen or a litigant in this country that the government is causing citizens to make the payment of the taxes which, please mind, which litigant is contesting not payable. Please follow my words. What Supreme Court said is, we would not like to hear from a citizen or a litigant in this country that the government is coercing citizen to make payment of the taxes which he believes it is not payable. The Supreme Court hasn't said it is payable or not payable. It is not payable. Supreme Court hasn't said it is not. Which taxpayer believe it is not payable. That means, let us assume there is a atta factory or a flour mill on today. In the GST scenario, let's take it in this way. Taxpayer believe that my product is exempted. Tax officer believe that this product is taxable. Can department force recovery?
Supreme Court says no. What you can do is, you have to make inquiry, no problem. You make whatever kind of inquiry you want to make. You adjudicate it, pass an order, giving all the opportunity, whatever kind of opportunity and procedure given in the law, follow this, pass the order, let the appeal filed by the taxpayer, and let the matter be decided finally. Once it is finally decided, you recover it. So friends, this is what a legal system. You cannot go on a day one and just on a gunpoint, you can say, no, you pay the amount. Otherwise, we will not leave your factory or office. So this is what I would say triggering point or a very beautiful judgment of Dower India Limited. So which one must refer? Now what happened? Let me give you another example, which was a Century Metal Recycling. This is a beautiful judgment, came from the Punjab and Haryana High Court. And please mind, against this, department has filed the SLP, which was got rejected. So you can take it as a final judgment. What happened in this case? This will be just like ours case. What happened nowadays? Now what happened? You must have encountered this, that during the search proceeding, by way of caution, or you can say pressure, or maybe you're using different tactics of maybe under threat of arrest, etc., etc., department gets the amount deposited by one way or another. So in that case, what happens? And whenever they ensure that you file a DRC 03, and at times whatever cases I'm dealing, most of the time what happens, they file their the DRC on their own through your system. Sitting on, maybe just they ask what is login ID password, and they just put it in your system and they file their DRC on their own. And they choose into it 74 subsection 5, that is voluntary payment. This is what is practically happening. And after that, if you agitate, they say, okay, you on your own side, this is a voluntary payment. This is what practically happening. So in this scenario, if you will see this judgment, Century Metal Recycling versus Union of India. This is from Honorable Punjab and Haryana High Court, against which SLP was rejected. This is a 2009 judgment, if I'm not wrong. In a crystal clear terms, Honorable High Court has specifically said that unless there is a demand, assessment and the demand, amount deposited by the petitioner, even though called or referred as a voluntary, cannot be appropriated by the department. Appropriate means it cannot be set off against the tax liability until unless there is an assessment has been made. So now what happened in these search cases when the 74(5) is being filed, whether determination happened? Answer is no, determination has never happened. And in that case, Century Metal, specifically High Court ordered that, okay, you cannot justify just by saying that they have voluntarily deposited, and they order to refund the amount to the taxpayer. Honorable Punjab and Haryana High Court said, you have to refund this amount. Now let us come to some of the judgment which has been which came in this search proceedings in the GST era. Starting from one of the landmark judgment came on 16th February 2021, or I would say I must say order, not the judgment. Interim order was there. Bhumi Associates versus Union of India, dated 16th February 2021. While it was a very, I must say, high-handled case, whereby department almost camped at the premises of the assessee, they have given a 4 clear-cut direction to the government. 4 clear-cut directions. Number 1, please hear it very, very important. Department court has specifically ordered that no recovery by any mode, no recovery of any sort during proceeding under section 67 be made under any circumstances. Under any circumstances. What is 67? We have already discussed 67(1) inspection, 67(2) search. So whether it is an inspection, whether it is a search, no recovery has to be made during these proceedings. Second, most important,
even if assessee comes for a voluntary payment, then also officer should advise them, don't pay it on tomorrow, today. Rather, you may pay once we leave the premises on the next day of that. One may laugh on it. That officer is supposed to advise that if the taxpayer is making a voluntary payment, then tax officers are supposed to advise, don't pay until unless we leave this premises. You may pay at a later stage. What happens, we all know. Third, they have specifically said that facility of a complaint or grievance has to be there. If any taxpayer believes that the complete procedure has not been followed, or perfect procedure has not been followed by the officers, and then if there is a complaint, then inquiry has to be there, and strict disciplinary action against the violating officer has to be there. These kind of 4 instructions were passed by this Honorable Gujarat High Court judgment. Now what happened? Gujarat High Court has passed the order and directed the CBIC and Chief Commissioner and Chief Commissioner Commercial Taxes and State Taxes, Chief Commissioner Central Tax and the State Tax to make this kind of instruction. It's more than 1 year, no instruction came. This order was passed on 16 February 2021. More than 1 year elapsed, but no instruction came on this particular, on this order of the Honorable High Court. But recently on 25th May, last month, an instruction came on this direction from the CBIC. What we understand from the informal sources or from the friends, that since the no order was passed, some kind of contempt was planned or maybe pursued. I'm not sure about it. So that is why these kind of instruction now came from the CBIC. Now, very interesting to see is what instruction has been given by the department. I must say that this is nothing but a promotion to all those officers in disguise of this instruction. Instruction came on 25th May. What they said in the instructions? They said, number 1, some of the taxpayer, after voluntarily depositing the amount, alleges that use of force or coercion was there. See, try to understand the basic theme. What circular is saying? Taxpayer pays voluntarily and then they alleges there is a use of force. This line itself gives that there is a preconceived mindset of the board in issuing the instructions. Second, they identified that voluntary payment is done only after login from the taxpayer's credentials, by way of credentials of the taxpayer. Who will make them understand that when those booths are there at the residence or the factory of any person, they ask forcefully, what is your login ID and password? Please go check what is ground reality. What is the logic behind saying that there is a voluntary payment, that you use your login ID and password? अरे आपके बाबा घर पर जब आ जाते हैं तो जबरदस्ती लेते हैं आपसे आईडी पासवर्ड. This is what the grievance of the assessee. Then they say, okay, legal position is clear, that recovery cannot be there before passing of the adjudication order. This is what they have said in a plain term. Everyone knows it. Even officer knows it. Officer who presses for the recovery, he also knows it, that recovery is not possible. Then they say, but voluntary payments are possible. See, that's something like a jalebi bhai, jalebi bana rahe. That, but recovery is not possible, but voluntary payment taxpayer can do. So this is nothing but, I would say, and this instruction doesn't talk about anything on what kind of grievance portal they are making.
This was one of the instruction. They are supposed to make a complaint or a grievance redressal portal. No such portal is as of now. Anyways, so I just highlighted it. In fact, these instruction, see, several legal positions are there. All those circulars and instructions only, and they are refer one of the landmark judgment from the Honorable Supreme Court Bengal. I normally use this uses in court proceedings always, and that one may refer verbatim. Let me quote what Honorable Supreme Court said in that particular judgment. That circular So now your audio. Oh. Yes, sir. Got disconnected. He may be joining again. But I must say, audio is kindly audible, and the things sir was about to tell. Yes, sir. Has joined back. Sir, are we audible? Yes, got corrected. Okay. Sir. Audible from my side? Yes, sir. So see, one of the leading judgment from the Honorable Supreme Court, which I normally uses very frequently. To all my friends, please refer para 18 of the judgment of Honorable Supreme Court. Beautiful judgment, which in crystal clear terms says that circular Just look at the question. Yeah, actually, sir is disconnected again. Maybe join back. Sir is trying his best, yeah. Yeah. Exactly. I don't know where you hear it. No issues, sir. No issues. You are doing your best, sir. We understand that. Thank you so much for trying at such a level for us, sir. If I'm not wrong, referring Bengal iron. See, there is a beautiful para which is written, which one may directly refer from the Bengal iron. So, Supreme Court specifically says that the circular or a clarification issued by the central government or the state government are merely their understanding of the statutory provisions. That's it. Not more, not less. They are not binding on the courts. They are not law of the land. They specifically says if the tax is supposed to be recovered, it has to be recovered by all means, not a problem. So please mind that one should not give much importance to these circular or instruction. This is also in circular only. This is also an instruction only. That's it. It's not law of the land. Now, let me refer a couple of other judgments, which I'm sure you must be hearing all these aspects. Nandidal Mills, another judgment, April 2021, after this Bhumi Associates. The same scenario was there, which we were discussing, that there was a flour mill. What happened in that flour mill? That the taxpayer was treating it as exempted. Department wanted it to be, department said it is a taxable. As per own their self-determination, they computed the tax liability for 7 crore something amount. In fact, what they did is they have made a chart and the taxpayer agreed, okay, I will pay it. When there is officers are sitting on head, each and everything gets admitted. So what happened? They admitted, okay, 7 and odd crore liabilities are there. What they
Hello. Sir, are we audible to you? Jatin sir, are we audible to you? So maybe we can activate again. We are giving pains to Sajja. Exactly. But again, that's amazing. Hats off to its patience and perseverance, both. If somebody else is there, they could have it in. Sir is trying his best. Please have a separate session with Jatin sir. Definitely, we will definitely place a session. Even for the participants, tomorrow we are having Girish Ahuja sir with us in the next session, the first session of tomorrow's plan. And also the second session, it's a special one with all the past presidents. We are having Nihar Jambusaria sir, and we are having Uttam Prakash Agarwal sir and Atul Gupta sir. The past president, 3 past presidents. And special is the interview round. It will be on interview session. And the round will be taken care by Jay Chiaraji. He is from past CCM of WIRC. And Kemisha ma'am will also join us. Last but not the least, the last session will be on motivational round, how to manage stress in professional life. It will be taken by H.G. Rishi Kumar Das Prabhu. He is from ISKCON temple. Jatin sir has been. Hello, sir. Are we audible now to you? So before initiating, I just want to take apologies from you, and you are so patient and you are so cooperative that you are taking so much pains to conduct this seminar. Sir. Sorry, sir, for this kind of. Not sorry from your side. It should be. It's something which is not meant for anyone, neither me nor you. It's some technological issues. So one more session from you. So we all want one more session. Maybe once you're back in Jaipur, so directly from Jaipur legal office, we will love to hear you. Let's start. So how should we proceed now? Because it's again and again. This time it got disconnected for a longer period as well. Yeah. Took lots of time for reconnection. So maybe maybe sir, just we said if the network issue is persistent over there, we may conclude it by giving at least the main key things which the professionals needs to bear in mind whenever their clients are going through a search and seizure. Just the tip of that iceberg, sir, right now. Okay. Yeah. Okay, fine. So a couple of things which for professionals are there. You may off Yes. your audio is audible. Okay, fine. See, couple of very quick thing, because I understand whenever this gets reconnected for 3, 4, 5 minutes, it's remains in the base, and then again there are some issues. So, anyways, very quick pointers from my side. See, whenever you get a client against whom the search has been conducted, let us assume this is you got a client immediately after the search. I think we can request sir to turn off the video. Jatin sir, are we audible to you? I personally believe I don't want to give such kind of pain to sir. Yeah. Literally, just taking suggest why the department. A couple of things I was telling.
Yes. See, whenever you got a client, let us assume you got a client or your client has been searched, your regular client is being searched, and he meets you immediately after search. First of all, tell him that it is not the assessment has happened. Assessment is yet to happen. It is an only and only inquiry proceeding, number one. Number two, ask him whether any statement has been recorded. Admitted something is not a true state of affairs. Please retract it immediately. Don't make any kind of delay. As Let's keep it simple. I take apology from on behalf of the Kishangarh branch of ICAI that due to some technical issues, sir had not been able to join, and I don't want to give such kind of pain to the speaker and such an eminent speaker and such a learned faculty. I request sir, sir, I don't want to give such kind of pain to you, sir. With your kind permission, I just want to conclude the session, sir. I don't want to give the pain to you, sir. Please don't take it. Otherwise, sir, I'm feeling so bad for sir. Inconvenient for the participants as well. So maybe under the aegis of the Kishangarh branch itself, maybe in future, along with other branches, we may organize a session in future if you oblige us to give a time in just a near future, sir. Because it's a very, very important topic and pertinent searches are happening across India right now. Definitely, sir. Sure. National level webinar for especially for your session for at least 2 hours, and all these participants will be informed again, and under the aegis of PDC itself. Sir, I'm sorry to conclude it like this. Sir, so what do you think? So in the midst of the technical disturbance which we have seen today, so this is what's happening into the virtual era, but we have heard we have heard the significance of section 67 and an interplay with the constitutional rights of the necessary in the search, and with the promise that sir will be back providing his in-depth analysis again on the section 67, the rights of the assessees and the duties and responsibilities of the consultants to consult on the clients. We will be back shortly again with the session to the Jatin sir. And to conclude with today's session, I just like to invite the chairman Kishangarh branch Mohit sir to conduct a vote of thanks to our eminent speaker Jatin sir. Mohit, over to you. The heavy heart. I'm not happy to conclude the session so early. And while having sir, and sir is smiling again. And sir, it's your patience, and I salute it from the bottom of my heart and on behalf of Kishangarh branch. Officially, apologies and sincere vote of thanks for your kind participation and being a speaker. Sir, you are since last 3 hours. I'm regularly giving you a sir. When are you joining? Sir, when are you reaching hotel? Sir, when is your flight is landing? I'm continuously irritating you, sir. And with all my due respect to all the participants, I promise you on the behalf of Kishangarh branch that we will very soon connect to Jatin sir again, and definitely we are having the session on this special topic again. Without taking much of your time, and I just want to thank Tarun Modi for managing so well, Kirti Bhai, and all the participant branch, Alwar, Bikaner, Chittorgarh, and Sri Ganganagar. I wish you all the best, and I request you all to please join tomorrow. We are having Girish Ahuja sir with us. We are having past 3 presidents, Sri Nihar Jampusaria ji, Sri Atul Gupta ji, and Sri Uttam Prakash Agrawal ji. Also with moderation of Sri Jay Chiara ji, we will taking an interview how to develop practice in tier 2 cities. And also we are having a special meditation session, motivational session from H.G. Rishi Kumar Das ji from ISKCON Temple, Delhi, New Delhi. So there is a high bumper pack. Well, right now we are about to conclude it with a deep sorrow in my heart. I want to thank again Sri Jatin Harjai ji. I'm following sir and admiring sir since last 3 or 4 years, and personally I admire you, sir. Thank you for being us and so cooperative and so patient, sir. Thank you a lot. No, I must say that actually, indeed, it's my personal loss that I could not share all the aspects.
and actually wastage of time for the members because of due to things which are beyond anyone's control. So anyway, Sir, thank I you. believe Thank you. it's not waste of a time, sir, at all. Whatever we are able to hear you, see, right now, if I just need to say the importance of the word da, that is the key takeaway today. So it's not any, it's the word da. So it's never ever a waste of time whenever with you, sir. Thank you very Yes, much. thank you. Thank you very much, participants, and thank Bye. you very much. Thank you. This is the end of this session 2, and we will get back to you tomorrow 4 p.m. Thank you, all of you. Thank you. Good night.